Good afternoon to one and all. I feel extremely glad to welcome everyone to this much awaited webinar, as this is a very fruitful startup webinar by NIMA OBGY Society. I am Dr. Sujit Shinde, Joint Secretary, NIMA OBGY Maharashtra. I will be coordinating today's webinar with my coordinator, Dr. Archana Pandey Jumle. On behalf of NIMA OBGY Central, I welcome all the delegates and dignitaries for today's knowledge enriching session on medico-legal issues in day-to-day OBGY practice. Now, I would like to request Dr. Archana to continue further with the session. Archana ma'am. Yes, sir. Thank you so much, Sujit sir. Good afternoon, everyone. Very good afternoon to one and all. My warm welcome to all the dignitaries and delegates. With the due permission of all the dignitaries, we will have virtual inauguration ceremony with Dhanvantari Stavan. So I would like to request Dr. Sujit sir to please kindly play the Dhanvantari Stavan to complete our virtual inauguration. Please share Dhanvantari ji's photo on the screen. Now to continue further, I would like to request respected Dr. Priyanka Nakade Madam, Secretary NIMA OBGY Society Central Body, to welcome our dignitaries, chief guests, and brief us on our NIMA OBGY agenda. Over to you, Dr. Priyanka ma'am. Okay, thank you, Archana. Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Priyanka, Secretary of NIMA OBGY. It's my immense pleasure to extend a warm welcome to all of you present over here on behalf of entire OBGY committee. I would like to take this honor to welcome all the dignitaries present today. First of all, I welcome Dr. Vinayak Temburnikar sir, our President NIMA Central, our Secretary U.S. Pandey sir, and Treasurer Dr. Ashutosh Kulkarni sir from Central Body. Then I would like to welcome our President of NIMA OBGY Central Committee, Dr. Kamini Dhiman ma'am, and our Treasurer Dr. Vishnu Bhavne sir. From our newly formed body of Maharashtra State, President Dr. Suhas Serlekar sir, Secretary Dr. Manoj Gaikwad sir, and Treasurer Dr. Ajay Raj Bal. NIMA OBGY Society had been formed on 13th Jan 2022, and with the aim of to promote and spread the knowledge and foster the education in subject of integrated obstetrics and gynecology. During these periods, we work upon the different agendas from our OBGY practitioners, right from the mandatory syllabus changes and modern technology insertion, PCPNDT, MTP Act insertion, fellowship courses, and job opportunities in government sectors for our colleagues. Now, being the secretary of organization, I was always thinking of our people and their welfare. It came in our knowledge that the piece of happiness is the key of the medical practice, and it can be achieved by the litigation-free practice. We suffer due to the lack of knowledge in the medical legal laws. So ignorance is the cause of suffering, and to cease the suffering, one needs to replace it with the knowledge. With this in mind, we have decided to
execute the same, and we truly reached to our goal today by organizing a medical legal webinar for our all White Army OBGY members. So let's start with this experienced persons in this field and the dynamic personality we have today, Dr. Advocate Arun Mishra sir and Dr. Manish Majbe sir. So please Archana, carry with this. Dr. Archana. Okay. I think Dr. Archana is not there. Ma'am, I'm here. Yeah, okay. Archana? Yes, ma'am. Yes, please. Dr. Sujit, sir. Thank you, Dr. Priyanka, bringing us with the complete aims and objective of our NIMA and OBGY society. Definitely, we have a great future ahead. Now, without any delay, we will start with our session. To begin with, I would like to introduce our chairperson, Dr. Nitin Kothare sir, the man who needs no introduction. He is the legal committee chairman at NIMA Central Committee and much more things. Sir will be chairing both the sessions of medico-legal issues. Further, it will request to introduce our speakers and their topics. Thank you, Dr. Sujit, sir. Now, with the due permission of our respected chairperson, Dr. Nitin Kothare, sir, I would like to introduce our topic for the first session, that is criminal and civil liabilities in gynec practice with defense, including consent. In the last few years, doctors have been target of a growing number of civil and criminal lawsuits, as well as ethical procedures. Obstetrics is a widely targeted career, not only owing to its inherent risk, but also owing to a mistaken approach of the judiciary power about the obligations of medical doctors. To talk on this very important and need of the hour topic, we have amongst us very eminent speaker and a renowned medico-legal consultant, Honorable Advocate Dr. Arun Mishra, sir. I would like to take this honor to introduce our respected speaker, Advocate Dr. Arun Mishra, sir. He is a practicing advocate in Supreme Court, High Court, and a widely known medico-legal consultant. He always believes in spreading awareness about the law of medicine. He has completed his LLM crime from the Mumbai University. He has also, to his credit, different graduations in microbiology, medicine, and law. The thirst for knowledge and the logic behind science led him to the world of data and documentation unfolded before him. He was able to combine his medical practice and law and started Doctors Risk Medico-Legal Services, an organization to protect medical fraternity. He has authored 8 books on law of medicine, 2 books on diet, and 1 book of Kabir philosophy. Having successfully handled almost 18,000 plus medico-legal cases in the last 18 years, he humbly attributes this to practical and combined knowledge of medicine and law. His ambition is to create awareness, unity, and confidence amongst doctors. In the field of medico-legal field, he is arguably the best in India. His success rates counts almost 100%. There is a famous saying, united we stand, divided we fall. It has been his sincere efforts to bring the medical fraternity together called the Voice of Doctors. I would like to welcome Honorable Advocate Dr. Arun Mishra, sir, and would like to request him to kindly start with the session. Over to you, sir. Welcome you, sir. Thank you, Dr. Archana. Thank you, Dr. Priyanka. Thank you, Sujit, sir, and all dignitaries, and very special thanks to Dr. Nitin Kothare, Mauni, and various delegates here for giving me opportunity to share my experiences of medical journey and law journey in this field. Practically speaking, my friend, truthfully, when I started my career in medical law in 2003, there was not much cases I could able to find when I talk about the doctors because of the trust factor which was there between doctor and patient. As journey gone on, 2012 onwards, I have started seeing a good number of cases. Every day there was some definitely new things to learn. And by the time 2020 we reached today, let me very honestly accept the fact that now we are experiencing all frivolous cases going to the court of law
which we never ever have seen in our whole career. And now the statistical data has gone too high that this is the time where I request every fraternity doctor to protect themselves with the knowledge, because my journey of experiencing of handling the cases has very categorically suggested me only thing as a best defense to the doctor to educate them in a medical law. Because only fear my doctor has got that they don't have the knowledge of the law and they don't know what next is going to happen if any table death also happens. But before I start my talk, let me tell you very clear word with my experience of arguing the matter in honorable courts, including Honorable Supreme Court, that law is really good for the doctor. I repeat my word, law is really good for the doctor if the doctor knows it. But truthfully, we don't know the law and we suffer a lot. And my experience handling all 18,000 issues, I have found that not even 0.25% has gone to the court of law, was only sharing knowledge at right time at right place. Because my doctor don't know what next to be done and that needed to be guided to them. I appreciate because in NIMA, Dr. Nitin Kotle, I know, has really done a great job, and I could able to see that major issues got resolved when people reaches to him and give and share their problems. You all agree with me, if you have faced any problem, only with a discussion with experts, probably have resolved your issues altogether. But now things have changed because now the command of whole family is in the hand of 25 years age group of my daughter and my son, because they are the decision maker of the house. You decide of taking simple mobile also, they will take a decision that which brand and what brand and everything, because of the information age we are already. And they also takes a decision to take their parent to the doctor on the basis of review and other factors. And they work on conservatism, not on a trust. And that's the reason why cases are cropping up in court of law. Second major impact post-COVID, what I personally have seen when I see lots of cases are coming to me, was definitely a different look toward the medical fraternity. In COVID scenario, this is my personal opinion, the police authorities and their families, judges and their families, advocate and their families got admitted to corporate hospitals for the treatment of a COVID, and they personally experienced the bill charged by the corporate hospital, which has given a message to them that all doctors are looters. And that's the reason the view toward the doctor had got changed. And today we are getting a cases, I'll tell you personally my experience of cases of crores and crores rupees been filed in every court of law. And to the extent the frivolous cases, which you also can never imagine that cases can be filed on this ground, are going to the court of law. Let me give an example to make you understand what I mean by frivolous case. I got just a case of a last 2 weeks or 1 week back of a gynecologist. When she called me, she said that complainant has sent a notice and filing a case against me. And when I have seen the notice, read the notice and heard the story, I was really shocked. What happened in that case? The Muslim patient, ANC patient to this gynec, was regularly in a checkup of this particular doctor on her OPD clinic on a consulting room. When she came last, she was already in a labor, advised to get admitted to hospital where this consultant was visiting. She got admitted there, all investigation properly done. When after investigation, clinical examination, doctor found that LSCS is going to be needed, informed the relative, all proper consent was taken, everything was taken. Somewhere, some relative has only spoken to some of the hospital authority कि OT के अंदर सब male ही होंगे, female ही होंगे कि male भी होंगे. So one of the receptionists said कि no anesthetic is male. Well, operation happened, surgery happened, everything was uneventful, proper, 6 months gone, and 6 months later, the husband came to this doctor, argued with the doctor कि मैं आपके पास अपनी वाइफ को इसलिए भेजा था कि आप फीमेल डॉक्टर थी और मेरा एक्सपेक्टेशन था कि सारे फीमेल डॉक्टर ही ट्रीट करेंगे, लेकिन ओटी के अंदर 2 मेल डॉक्टर और तीसरा कोई असिस्टेंट था. That is not acceptable. And only on this ground he filed a complaint. Can you believe?
अब एनेस्थेटिक पेडियाट्रिक दोनों भी मेल थे. अब एनेस्थेटिक और पेडियाट्रिक को तो फीमेल लाना पॉसिबल नहीं था इमरजेंसी के टाइम पे. व्हेन देयर इज इमरजेंसी नीड ऑफ LSCS, either बच्चू will survive, mother will survive, or both will go off if at all they start searching for the female doctor as a pediatrician and anesthetic. And that was a really trouble to all the doctors, not with you all people, but it's a very common phenomenon across the country. But case has been registered, visiting kiya gaya, notice aa gayi, and now filing a complaint. Even gone to the police station. I was utter surprised that for the purpose of the same, he went to the police station also. So this is what is changing era of this country. And every day I get a call, because the moment my doctor get any summon from any police station or a court or any call from the police station, I have found that people really get terrorized. I don't know why. But let me tell you, in criminal liability, it is not me. It is the Honorable Supreme Court very categorically said in his judgment, beautifully narrated judgment, that human body is a complex machine and medical science is a complex science which is beyond imagination of any medical practitioner, that what is going to happen to the patient. Hence, even medical mishap in the form of death, the word used, medical accident in the form of death, doctor must not be held criminally liable if due care has given. So beautifully construed words in 2005. And furtherance to that, the same judgment says, till the time government comes out with some laws regarding protecting a doctor, we are forming a guidelines. Whenever there is any criminal offense need to be registered against the doctor, the guidelines need to be followed. And if not been followed, then criminal contempt petition can be filed against the officer. So beautiful judgment, my friend. And that is protected my doctor in every criminal law. Altogether, that my doctor is not going to get arrested on the spot in any given scenario situation. So there is no worry if at all you get a summon, because many of the time I found that summon is either for the want of a document which sent in 91, section 91 of CRPC, or it will for the investigation under 160 or 173, or for some purposes, but not for the arrest. There is no question of arrest that you are going to be arrested on the spot where you fear if at all death has happened. What law says due care word? Due care word means if you have given all the possible care which needed to be given as per your expertise, as per your knowledge, to resuscitate the patient if at all there is complication happen, and everything has been noted on a paper, believe me, my friend, you will never ever been held responsible for any case, let it be civil, criminal, or medical counsel. This is what is the law. I say because I practically practice in a court of law. I have taken multiple cases, the quashing of FIR. I have done multiple cases where I could able to get a bail of my people very easily on the ground of their practices. And naturally, my doctor was exonerated very clearly by medical counsels only on the basis of the fundas given under the law. So let me give a brief idea about what criminal liability when I talk about in medical negligence cases. By and large, in olden days, section 304A was widely applied. 304A very categorically said, causing a death without intention with a negligent act, which led to death. So 304A was applied to driver also, because while driving the car, if at all he dashed someone and dies, intention was not there. Negligent driving can be alleged. And because of this, this section was very simple section, which attracts up to 2 years punishment, bailable offense. When I say bailable in a law, it is a citizen's right to get a bail. Even if judge is not in your wavelength, he cannot reject the bail because that is a right of a citizen. So bailable offense. I'll give a crude example to make you understand. In Salman Khan's case, if you all remember, 7 people died in a car accident at a night. And he got a bail on the spot by paying 1,200 rupees to the police station. When 7 people dies, he gets a bail. With a medical practice, if at all one person dies because of a negligence, why can't you get a bail? This is the same section, 304A. And furtherance to that, 304A, once get attracted, there is no arrest, and during the trial, it becomes very difficult to prove that there is negligence on the part of doctor. So not to worry,
But later I have found that lots of modification, interpretation happened in a law. And very recently, I have found multiple cases getting registered against the doctor under 304 Part 2. Now, the 304 Part 2, let's understand in the way of a lawmaker, what they said, causing a death without intention. Remember what the lawmaker wanted to pass it to all your people. 304 Part 2 says, causing a death without intention, with the knowledge that particular thing can lead a death. So with the knowledge component added in that, which means that you have got a knowledge, but you cross your field and death has happened, then section become non-bailable offense. Then you are on a mercy of a judges to get a bail or not to get a bail. So non-bailable offense, of course, 10 years punishment. Very Draculous and deadly section. And recent past, I've got multiple cases under 304 because knowledge component came. Let me give you one or two examples. Very recently, you all must have discussed this matter and got to know about all this. A case of Mahad, where this couple doctor was alleged to do an abortion in a lady, was a BMS doctor, alleged to do abortion through MTP tablet, and thereafter probably in his hospital tried to do a DNC when bleeding was there or excessive bleeding was there, as alleged on a doctor. It has not been proven, but I'm saying allegation put on a doctor. And later it turned out to be that male-female detection was done by some Satara doctor. Now police have reached to them and arrested them. This doctor has remained in jail for almost 3 months. Yesterday, this case came to me for a purpose of bail of this doctor. And his doctor was arrested under 304. Why 304? They said that doctor was having a knowledge that I am not a gynecologist as per MTP Act. I am not allowed to do MTP as per MTP Act, but I crossed over the field. I have violated the law of PCPND Act. And in this process, knowing that he is not allowed, he caused the death. Same thing happened in Salman Khan's case, where after deposition done by the constable, that he was drunk and drive, section got changed to 304 Part 2. So 304 Part 2, interpretation has started in court of law for filing a cases against the doctor. Let me give another example with relate to modern medicine doctor. It was a case of a Delhi, which came to me for Honorable Supreme Court's bail application because doctor was there for 62 days inside the jail when this came to me and this doctor got a bail. In that case, he was a general surgeon. I'm talking about modern medicine doctor. He was a general surgeon practicing in Delhi area, received a patient with PV bleeding. Allegation put on him that he tried to do MTP. And then in that process, patient needed hysterectomy and thereafter patient died. This doctor was arrested under 304 by interpreting the law by these people, saying that not being a gynecologist, you have crossed over the field of a gynecologist. Being a general surgeon, you have went ahead of cross-overing a field and leaded to death. And then 315, causing a death of a child. When this matter came, I could able to give a benefit to that. But in Mahad's case, when I've read that FIR, very clearly mentioned that it was against women's consent because normally general practitioners don't take any consent and MTP tablet was given. And without women's consent, 313 of IPC is very deadly section, my friend. 312 talks about miscarriage, but 313 says causing miscarriage without women's consent is a heinous crime which attracts 10 years, even life imprisonment. Very deadly section. And we people, if at all, got indulged in MTP, proven to be, and then without women's consent, then whole section get changed and then bail become really difficult. This doctor is behind the bar from last 3 months, if I am not wrong. Yesterday, when some advocate approached me, sir, we wanted to have your help to take a, do an argument to get a bail in Alibag session court after charge sheet has been filed. So these are the 304 Part 2, which become now really question mark to all the people. Very recently with a hospital owned by BMS doctor, 2 consecutive cases I have got, where in one case, during the delivery, Bachu slipped from the hand of a
probably nurse, fallen at floor, got head injury, and then when shifted to NICU, by the time he reaches, he died. In that case, utter surprise to me when I have taken a bail of this guy after 2 months, that he himself has done a great mistake, because to wipe up the things, he called the baby back to the hospital and given a stillbirth certificate. I was shocked to read that stillbirth certificate. When everyone was doing, Bachu was alive. And from where it got leaked, when the person is taken to Samshan Ghat to bury the body, casually, the person who was doing an entry has asked this particular father, कि बच्चा पेट में मर गया था क्या? They are so intelligent because every day they get that certificate. They know what is there. तो बंदे ने बोला नहीं, बच्चा पेट में नहीं मरा था, वो तो जिंदा आया था, गिर गया था. And immediately they have done the burying part, and he was an informer to police. He informed the police, where later police has exhumed the body, sent for the PM, and doctor got arrested. See how grossly we do mistake, because the patient were close to them to wipe up evidence. Everything was properly done. Body was buried, but he was not aware that aisa bhi kuch ho sakta hai. You know, khabri can. Another case where injection given, it was a BMS owned hospital. I remember because I have taken a bail of this guy from Mumbai High Court, where nurses, this is the common with your hospital also. Please listen to that, because it should not happen to your hospital. During the over, normally when over was given by the nurses, that is the period, half an hour period, where they maintain a TPR chart and they push on each other the work which is pending. This hospital also, during the over, one bachu of 2 years, treated by pediatrician properly by qualified doctors, discharge, last dose needed to be given, discharge at around 3 p.m. probably, afternoon 3 o'clock. Last dose of antibiotic which need to be pushed because bachu was already on cannula, was not given by the nurses because they were busy, some other cases probably. During the over, she said to the other nurse, कि भाई इसको ये इंजेक्शन देना है, आप इसको दे देना. And that other nurse had argued कि ये तेरे ओवर में था, 3 बजे का पेशेंट था, why you have not done your job? And that is a very conflict between two nurses and all. And एक दूसरे के ऊपर push करना चालू हो गया. And in that, and relative was standing there. He was listening to both the nurses' argument about the work which was pushing on each other. And in that argument, some nurse, probably a newly joined, was given an assignment. She went to the table of that particular bachu. Unfortunately, वो टेबल पे बाजू वाले बेड पे एक 18 साल का 16 साल का लड़का था जो एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम के ऊपर था, और ये बच्चे को टैक्सिन 2 साल के चालू था. She picked the injection of azithromycin 500 milligram and IV pushed to the bachu. Overdose of azithromycin, patient got convulsion, on the spot died. Taken to the hospital, died. And then nurse was booked under 304 part 2, not having a qualification, and proceeded with the things, and with the knowledge died. Intention ita. And doctor was booked for appointing such a nurse. I had taken a bail. Was so why I am warning all this, because this is the commonest thing which is happening when I talk about criminal liability. In all given scenario situation, my friend, if you are doing a proper job and maintaining a proper medical record as per the law, nothing is going to happen to you. But if you do knowingly a gross mistake, then it is really difficult for my people to safeguard themselves. So 304A में कोई प्रॉब्लम नहीं है. वर्स्ट सिनारियो में आपके ऊपर केस हो भी जाएगा तो आपको कुछ होना नहीं है. ट्रायल कोर्ट को 7 साल लगते हैं. एविडेंट प्रूव करना टू डिफिकल्ट. आपको बहुत ही रेयर टू रेयर केस में पता चलेगा कि किसी डॉक्टर को कन्विक्शन हुआ है. बट 304 बिकम रियली ट्रबलसम, बिकॉज उसको जजमेंट, उसका ट्रायल को टाइम तो लगता है, लेकिन फर्स्ट 3 months where you are in a jail is going to be very troublesome. I have got encounter one case. Let me very honestly share with you all people. The first time ever I have seen a murder case put on a doctor. I was really shocked. लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको केस बताऊं मैं. ये केस कपोली का था. 65-year-old female gynecologist, modern medicine की डॉक्टर थी. वो gynecologist has got a patient of 5 months pregnancy, unmarried, and they naturally conspire, and it was decided कि एमक्रेडिल कर देंगे या premature delivery कर देंगे, and we will abort the child, and everything was finalized. उसका hospital बंद था, so she has taken a बच्चू to her friend's gynecologist hospital.
दोनों एक ही एज के थे, 65 प्लस ही थे दोनों भी. अपने फ्रेंड के गायनिक हॉस्पिटल में पेशेंट हैज ब्रॉट हियर एंड शी हैज डन प्रीमैच्योर डिलीवरी. बच्चू केम लाइव, 5.5 months शायद बेबी रहा होगा, definitely going to die. And worst part that what my doctor has done there, modern medicine doctor, उसने बच्चों को उठा के ट्रे में रख दिया. She was knowing that बच्चू is otherwise going to die. She has instructed nurses not to clean the baby, leave as it is, and एक बार इसका डेथ हो गया तो we will dispose of the body. This was what actually done by this lady. I don't know why this was done. The second gynecologist, midnight when she came from the conference and was taking a round, she found an utter shock that even after 4-5 hours, Bachchu was still alive. And he immediately shouted at the nurse that why you are not done a clinic and shifted Bachchu to NICU. And naturally from NICU, Bachchu was brought back and Bachchu died. This is all the story happened. And later, the girl has filed a rape case against the boy. जब rape case हुआ, तो police तो evidence of crime was a बच्चू. तो उसके find out करने के लिए जब ये hospital आई और जब उन्होंने nurses का statement दिया, it was utter shock to get such a statement from the nurses. And it got converted from 304 to 302 क्योंकि intention word आ गया. Causing a death with intention of causing a death is a murder. Is a murder. And nurse जिसने body ले जाके dispose of किया था, driver of the car, both the gynecologists, everyone got arrested on 302. My friend, it has taken a long time. I know gynec remained in her that age in a jail for quite long time. मेरा एक रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड, व्हेन क्रिमिनल लायबिलिटी अगर आप मेरे से पूछोगे और जो मेरा अनुभव बताता है, unless you knowingly cause something, nothing is going to trouble you. When in medical practice, it is very difficult to. But in routine practice, let me tell you, nowadays, people are interpreting your medical record. Now, on the same ground, let me warn you with one more thing, where I very much emphasize on the knowledge word. Knowledge word means there's a case happened where without investigation, surgery was done, alleged by the complainant that without investigation, surgery was done, and patient has died. Had termed to be a knowledge component because basic investigation करेंगे तो कम से कम hemoglobin level तो पता चलेगा, कम से कम basic blood factors तो पता चलेगा, diabetes का टेस्ट किए तो कम से कम पता तो चलेगा कि patient septicemia में जा सकती है. So knowledge component is interpreted. I got a case of ENT surgeon, if I remember, who was posted a peritonsillar abscess patient to a hospital at 2 o'clock. He thought that I am going to do an OPD. Send a pathology report in the same hospital, which is common in your hospital also. So please be careful. What I'm sharing can happen with any hospital. What he has done, he has sent a blood to same hospital pathology department. 4 o'clock, he called to the pathology department, confirmed the report, and he found that every report is absolutely normal. 5 o'clock, he posted a patient for the surgery. 5:30, medical mishap has happened. Till 6:30, they have tried to resuscitate the patient. They could not able to. 7:30, they declared the death after making all proper paper, called the police, given the body for the postmortem, and all medical record was handed to the police because immediately, since the case of accidental death has been reported, ADR filed is filed, complainant has given a complaint, all medical record was taken by the police authorities, and that same medical record was sent to the committee for opinion. My friend, ये रूटीन आदत है, ये रूटीन फैक्ट है कि पैथोलॉजी रिपोर्ट रात को या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नॉर्मली नर्सेस फाइल में लगाती हैं. एवरी हॉस्पिटल का ये क्लियर डिक्टम है कि नॉर्मली पैथोलॉजी रिपोर्ट कम्स इन नाइट और नेक्स्ट डे मॉर्निंग एंड गोज टू द फाइल. इन द सिमिलर वे ये केस में क्या हुआ था, चूंकि पैथोलॉजी रिपोर्ट का ध्यान ही नहीं आया डॉक्टरों को, उन्होंने पैथोलॉजी रिपोर्ट के बारे में कॉमेंट ही नहीं किया, पैथोलॉजी रिपोर्ट पेपर के साथ गया ही नहीं, तो हमारे जो डॉक्टर ओपनाइज कर रहे थे, उन्होंने ओपनाइज किया एक ओपिनियन. मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, उन्होंने लिखा था कि व्हेन फ्रोथ वाज ऑब्जर्व्ड, क्लियर इंडिकेशन ऑफ पल्मोनरी एडिमा, वाई डायरेटिक, लैसिक्स गिवन आफ्टर 45 मिनट्स. ऐसा नहीं कि मेरे डॉक्टर ने टाइम पे नहीं दिया होगा, बट व्हाइल राइटिंग अ मेडिकल रिकॉर्ड, मेनी ऑफ द टाइम पर्टिकुलर्स एंड टाइमिंग गेट चेंज, एंड लॉ इज एब्सोल्यूट. वो तो वही पड़ेगा जो दिख रहा है.
Second comment was really for all my people here. Second comment क्या था कि either investigation not done, क्योंकि pathology report थी नहीं और comment करने वाले कौन? All doctors. And मेरे डॉक्टर को ये पता था कि my doctor is not going to do a surgery without doing a proper investigation. That were confident, but report was not there. So they commented either investigation not done or not documented. That was a comment on their opinion. And when I got to take a bail of this doctor who booked under 304A in criminal court, I was utter shocked to hear the public prosecutor argued for almost 45 minutes only on one point, that law is absolute. Law के अंदर pregnant है या pregnant नहीं है, बीच का कुछ नहीं होता. Absolute है, 2 into 2 4 है. और फिर उन्होंने वो word को narrate किया कि either not done or not documented. And he said to the court, when there is no documentation, then it means deemed, meaning that there is not done at all. And my doctor has gone without investigation, operated a patient. So knowledge component comes, causing a death without intention, with the knowledge that particular thing can lead to death. I say that I have got a bail, that is different issue altogether. But why I am sharing कि भाई जो पैथोलॉजी रिपोर्ट अपना नहीं है, वो पेशेंट के साथ जाना है, तो कहीं तो डॉक्यूमेंट करो. ये केस किसी के साथ भी हो सकता है. Lots of cases are happening where my doctor been booked under 304 now. My friend, this is the time where you need to really think on yourself that we need to take all care that such a section should not get applied. I've got a n number of cases of 304. For want of time, I am not going to narrate all the cases, but I've got a n number. I can say multiple cases of 304 recent past I have got where I need to take a bail. In one case, let me give you the for your knowledge sake, for the BMS doctor. This was a case of Sangola, if I remember, Pandharpur somewhere. This BMS doctor was running a hospital, his own hospital, where he admitted the patient for thrombocytopenia, maybe because of malaria, dengue, whatever. He transfused the blood in ICU. Patient was there in ICU. He himself was a consultant there alone. He has treated that patient. He has transfused multiple blood products, could be platelet, could be whole blood, around 14 bottles alleged to be transfused. And patient died 3 days later. Human crime has happened because police has not taken the case. Lot political issue has happened in his territory. And because of the pressure, the civil surgeon has commented on a paper that being a BMS doctor is not allowed to use modern medicine of practice. Being a BMS doctor, he don't have any right to transfuse the blood and blood product. And being a BMS doctor, he cannot run an ICU. These are the three major, the comment on that, on basis of that 304 was applied on this doctor. And this matter came to me when I argued in session court and then finally in Mumbai High Court. And Mumbai High Court, I could able to argue this matter by presenting to the court the syllabus of a BMS doctor, which was, I asked and I got the syllabus. I could able to present to the court that in gynec subject, in surgery subject, in ENT subject, everywhere use of blood and blood product was taught to the student of these people. So they are having a hand-on practice on using blood and blood product. So that is absolutely wrong to say that they cannot transfuse the blood or blood product. In medicine subject of a kaya chikitsa, every emergency medicine has been taught to them. And this doctor was already having a multiple certificate of being RMO and experience in various hospitals and work in ICU. I said both the things clearly indicate that he is not only experienced, but by law, he is allowed to do emergency treatment to the patient. So there's no question that ICU he cannot run. And finally, of course, the law notification is already there. And after 2014, we all know because of effort of NIMA and various other association, the amendment of law of Maharashtra Medical Practice Act 1961 done under section 25 of the said act. Provision 4 and 5 has been amended, and one of the beautiful amendment done ever by state government, which has clearly allowed in section 4 all undergraduate doctor with schedule A, B and A1 and D to do all modern medicinal practice which they are trained in. If it's a section 5 of the same provision, it has allowed a PG student of Ayurveda to do all latest technologies, latest knowledge for the treatment of a purpose of a patient. So blanket permission given.
I could able to present to the court on the basis of Drugs and Cosmetic Act 1940, which talks about the registered medical practitioner's definition. I could able to present to the court the definition of a medicine. Medicine very clearly says what is applied, given inside or applied outside the body are said to be a medicine. And then I said drug and blood is the same, because blood is taken inside for the purpose of treatment. And in others hospital case, even Honorable High Court has given a judgment saying that blood is a drug. I said when blood is a drug and RMP of Ayurveda are allowed to use modern medicine practice and drugs and cosmetic and treated them as RMP to prescribe the medicine, then in all category, he has got all the permission to prescribe blood, transfuse the blood, treat a patient. And I got a very favorable result from Mumbai High Court for this doctor, and he got a bail immediately. I still remember that case. So lots of things are there. If you're doing your thing, you are legally been protected by law and you are absolutely safe. You are in the same direction. But if you are crossing over your field, doing MTP of no reason, doing PCP unity of no reason, by default, you are attracting the crime, or somewhere you are doing all these things for the purpose of earning or whatever reason, then if you are knowingly violating the law, then various sections can attract to every doctors of mine. My friend, criminal liability may be there, but very safe to all your people, because law has protected you. In same judgment in guidelines very clearly said that experts of medical fields are doctors. They said advocate is not an expert, judges are not expert, police authorities are not expert. So whenever one wanted to book a doctor in criminal liability, it is mandate to refer to the expert body for their opinion, preferably of same field, of same qualification, preferably of government hospital to get unbiased judgment. And if at all report comes against them, then only you can proceed. Otherwise, there's no chance. And if at all any doctor is booked without any reason, all the remedies lies with you to approach High Court under 226, 227 or under 482 of quashing FIR. Inherent power has been given to High Court, and you can quash all the things which you wanted to, if at all you really want. And quashing, let me give an example of Nagpur itself, where in a government hospital, 4 bachu of an ICU was given Kesol injection instead of gluconate injection mistakenly by the nurse. And because of potassium, all the 4 bachu died. The nurse was booked under 304. The duty doctor on that day in a hospital was on leave, but he was also booked on leave or gone out somewhere. He was also booked under that and under 304. When he went to Nagpur High Court for the quashing, he could able to present to the court that his role was not directly in there. There's no control of drug by him being a RMO. I am not at all related. Looking to all the ground, the quashing done by Nagpur High Court for the doctor. So quashing is your power. Going to the court for remedies is your power, which you can invoke anytime. So let me finish with criminal liability with saying one word to you all. You are absolutely safe in this country when I talk about criminal liability, because you are protected by the law in all criminal liability if you are in clear direction and following the law and doing the practice of yours, which is done by 99-100% doctor. So never ever get fear with the police calls or any summons. But when I talk about civil liability, I will definitely warn all my doctor here, because criminal liability, I can understand law is protected. But when it comes to civil liability, even the law says that simple medical negligence case also can go to civil court. Civil court means either under the law of tort to civil court. I've got a cases, even the Nagpur case of a gynecologist, I've got where he filed the case for 1 rupee in a civil court, and only prayer was that he at least court should confirm that she is negligent in a delivery death. But people can demand. In Mumbai, I got a case where 80 lakhs was demanded under civil court because 3 years limitation was there in a filing case in civil court and 2 years in consumer fora. But 99% cases go to consumer fora. So consumer fora law says that any simple medical negligence can be admitted. Simple, frivolous. Let me give one example. I've got a case where
this doctor, the general practitioner, got a patient of URTI, upper respiratory tract infection, clear diagnosis done by this doctor. That patient, because patient was suffering from running nose, fever, body ache, earache, everything, symptom of URTI. 67-year-old female treated by the doctor, given a 5 days prescription. Third day, 20-year-old patient of this doctor. Third day, bless the doctor. The day, fallen at home. Taken to tertiary care center. Taken to tertiary care center, where remained for 8 hours. Confirmed diagnosis done by the hospital that she was suffering from myocardial infarction. PM report reconfirmed the death as a myocardial infarction. My friend, the relative of that particular lady has filed 1.5 crore compensation case against the doctor by connecting myocardial infarction and URTI, which my doctor cannot. आप भी नहीं कर सकते. अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को MI से आप नहीं कनेक्ट कर सकते, लेकिन पेशेंट ने किया. इंफॉर्मेशन एज में he went to Google and found that earache mimics jaw pain. Jaw pain is a sign of cardiac element, and doctor has not done a workup 7 days before. My friend, this is what is his contention. When I argued the matter, the court of law, I said if at all on one symptom, I would have done angiography and stress test and lipid profile and 2D echo and other tests. Probably the same patient would have come to you for unfair trade practice. And we are not in UK, USA, where we are going to follow the stricter rules and regulations when we are dependent on economicity of the country, also in a patient's economicity. I could able to justify the treatment given by my doctor. I won the case, that is a different issue. But the pain which the doctor suffered in the last 2 years, till the time case got decided, was a great harassment, irreversible loss, and of course, legal fees, no doubt about that. So in civil case, my friend, I will definitely warn you, because Consumer Protection Act 2019 got changed in this country. And Consumer Protection Act 2019 has brought variable changes. One change which I really like to present to you all, the great change said that complainant can file a complaint where he reside or work for the gain. Now, all the my people practicing anywhere in the country will be liable for litigation across the country. Sitting at Nagpur, if you got a patient of Madhya Pradesh, the patient can file a case in Madhya Pradesh. A patient of Mumbai whose relative gone there, if want to file a case against you in Mumbai, they can file because new law has changed. The place has changed. Upper level of compensation is gone. Earlier, to convince the court for 1 crore compensation was a difficult task. Difficult task. But today, because of AMRA judgment of 11 crores and multiple judgment given by the honorable courts, where they said human life cannot be compensated with any amount of money, upper level has gone. To make you understand about upper level, I have got a case of cesarean death of 30 crores. I have got a case of injection, intramuscular injection leaded to death due to septicemia, 28 crores. And n number of cases, 10 crores and above. So upper level has gone. Thought process has gone. One interesting case of a chartered accountant came to me. I was really shocked and see why the cases get filed against the people. In this case, can you mute yourself, please, for the benefit of other people? Oh, yeah. Yeah, please, can you unmute? Because name is Archana Pandey, but someone other has joined it. So this was really an interesting thing, which I really wanted to share with all my gynecologists here. And how and why the cases goes against this. This was really something different, which I have encountered. Newly married couple, girl got pregnant, wanted to go to her mother's house for delivery because she was having a faith on gynecologist, which her mother has seen from years. Sasu wanted that she should go to her gynecologist because she has got a pain on her gynecologist. And you are understanding probably my conception, which the CA has spoken to me. And there was a conflict of going to which gynecologist. Ultimately, Sasu is going to dominate, and Sasu was taken to her gynecologist. After the delivery cesarean, she started complaining every day about the pain and something or the other. Means 6 months, he tortured the husband like anything because it all happened because of your mother.
I should have gone to my gynecologist, probably I would have gone just to satisfy his wife. This CA said that मेरे को gynecologist से कोई रिश्ता नहीं है जिसने आपका डिलीवरी किया, और मैं कभी भी मदर के साथ नहीं हूं कि वो gynecologist सही है. Just to prove this thing, he has done a research on a medical record to find out some loopholes to file a case, and he filed 5 crore compensation case against the gynecologist just to prove to his wife कि I am with you. और मुझसे बोला था कि सर मेरे को ना शांति चाहिए घर में, इसीलिए केस फाइल करना. When the people's mentality got changed in this country, try to understand that. And that's the reason I say civil medical negligence, we need to be very careful. And I will definitely advise as a defense to every doctor here sitting कि criminal liability में आपका कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता. Civil liability में भी आपका कुछ नहीं होगा अगर आपके पास प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी है. कुछ मत करो, खाली एक अच्छा कस्टमाइज्ड प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी निकाल के रखो. ऐसा प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी जो आपका लीगल फीस कवर करे, जो सारे टेक्नोलॉजीज को कवर करे, जो आज के स्टेटस के सारे प्रॉब्लम को कवर करे. कुछ भी हो जाए, केरला के अंदर मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूँ कि डॉक्टर के साथ अगर कोई पेशेंट ने आर्ग्यूमेंट किया तो डॉक्टर नीचे से पॉलिसी की कॉपी निकालता, उसके हाथ में देता, बोलता प्लीज जाके केस कर, आई एम कवर्ड. पेशेंट केस ही नहीं करता. आप समझ रहे हो ना कि इंडेमनिटी का मतलब क्या हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी इज टेकिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे ऑन बिहाफ ऑफ यू फॉर एनी डैमेजेस गोइंग टू हैपन टू यू बाय टेकिंग अ प्रीमियम. व्हाई डोंट यू गो विद प्रोफेशनल? एक बार आपके पास है तो आपको सिविल के लिए डरना नहीं. कितने भी केस हो दो ना, आपका क्या जाने वाला है. यू नीड नॉट हैव टू गो टू द कोर्ट. आपको कोर्ट जाना ही नहीं है, आपको कोर्ट में बुलाया भी नहीं जाता. वकालतनामा साइन किया, एडवोकेट फाइट करता. कंट्री में कहीं भी केस हुआ तो एडवोकेट देखेगा. केस हार भी गए तो लीगल फीस पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी देती है, कंपनसेशन पूरा इंश्योरेंस कंपनी देती है. सब चीजें आपको, आपका जाना क्या है. लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा दैट इज अ गुड प्रोटेक्शन टू यू. बट क्या होता है, हम लोग जो चूज करते हैं ना इंडेमनिटी पॉलिसी, वो प्रॉपर कभी चूज नहीं करते. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं. मैंने अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर, अपने स्टूडेंट को, अपने बहुत सारे कलीग्स को देखा, मॉडर्न मेडिसिन में भी देखा कि लोग कॉस्ट के हिसाब से प्रीमियम भरते. पता नहीं क्यों, जब उनके लाइफ के प्रोटेक्शन की बात होती है तो भी वो कॉस्ट देखते हैं. जबकि खुद के हेल्थ प्रॉब्लम होगी तो बेस्ट हॉस्पिटल में जाएंगे, कॉर्पोरेट में जाएंगे, पैसा नहीं देखेंगे. लेकिन जब इंडेमनिटी निकालनी होगी ना तो उसमें निगोशिएट करते हैं एजेंट के साथ कितना कम होगा. लेकिन वो देखते नहीं कि एजेंट उनको 1:4 पॉलिसी बेच के जाता है. 1:4 मतलब कि अगर 1 करोड़ का भी निकाला तो 25 लाख का कवरेज है. वो एजेंट ऐसे पॉलिसी बेच के जाता है जिसके अंदर सारे कुछ एक्सक्लूडेड रहते हैं, हम कभी पढ़ते भी नहीं. और तब आता है जब हमारे पास वो पॉलिसी की जरूरत पड़ती है, देन वी रियलाइज दैट everything is excluded in the policy, and then that policy is only for the psychological. Don't do that. All this, please. This is my experience. Have a customized policy. Customized policy available है ना, सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को कवर करता है, सारे लेटेस्ट अपलिफ्टिंग को कवर करता है, लीगल फीस कवर करता है, 1:2 आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्या, कैशलेस है, सब अवेलेबल है. डॉक्टर्स के साथ हमने किया है. मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लीज गो विद सच अ गुड पॉलिसी एंड हैव अ पीस इन सिविल केसेस. क्रिमिनल केस में हैव अ ब्यूटीफुल गुड मेडिको लीगल एक्सपर्ट ऑन अ फिंगर टिप, जिसको एक बार कॉल कर दो तो काम हो जाए. और प्रोफेशनल इंडेमनिटी सिविल के लिए, मेडिकल काउंसिल के लिए, यस, मैं आपको फिर से बोलूंगा, मेडिकल काउंसिल डेफिनेटली एक और डोमेन है जहां आपको कॉशियस रहना जरूरी है. क्योंकि फाइलिंग अ कंप्लेन इन मेडिकल काउंसिल हैज बिकम नाउ वेरी इजी. एक ईमेल काफी हो गया, एक ट्वीट कर दिया आपने पीएमओ हाउस में, एक ट्वीट कर दिया हेल्थ मिनिस्ट्री में, इट गेट डाइवर्टेड टू योर मेडिकल काउंसिल, and then medical council suo moto start because they need to answer to these people, and then medical council cases started. And medical council case mein, but not to worry, because ultimately people are there who are from medical background, they understand medical terminology, they understand the difficulties of the doctor. So possibilities, if you have been presented well, can really help you a lot. Let me give you one case to make you understand how presentation need to be done in court of law. Basically क्या होता है कि नॉर्मल एडवोकेट के प्रॉब्लम्स क्या है, दे आर गुड, बट मेडिकल टर्मिनोलॉजी से मेडिकल म्हणजे असं थोडंफार कळाल. कल्पना मैम, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ फॉर few minutes? I will not take more than 5-10 minutes, don't worry. And Priyanka madam, Archana madam, if I need to stop, please stop me, because when I'm in a flow, please carry on. Carry on. When I'm in flow, then really it is difficult for me to stop myself. So I was talking about medical council.
मेरे को प्रेजेंटेशन की बात कर रहा था मैं कि नॉर्मली क्या होता है एडवोकेट के साथ बहुत बड़ा डिफिकल्टीज क्या होता है कि दे आर मास्टर इन द सेक्शन विच दे एनकाउंटर एवरी डे, एंड फॉर अदर थिंग नेचुरली दे नीड टू रिफर. इवन फॉर मेडिको लीगल कंसल्टेंट, अगर आप मेरे को प्रॉपर्टी मैटर लेके आओगे तो मुझे भी लॉ रिफर करना होगा, because I am day in day out in medico-legal. I'll give one example to make you understand what is the difference between advocate and medico-legal experts part together. There was a case of a physician who admitted a patient of a poison intake, done a gastric lavage, all the treatment, patient was stable, married girl. और मैरिड गर्ल में क्या हुआ कि इन-लॉज का डोमिनेंस था. इन-लॉज ने बोला कि सर एमएलसी मत करो, मेडिको लीगल कंप्लेन मत करो, पैसा वही देने वाले थे. और डॉक्टर ने बोला नहीं, बट शी कैन से टू द अथॉरिटी. हस्बैंड ने 1 घंटे में इतना ज्यादा प्यार किया उस फीमेल को जो पूरी जिंदगी में नहीं किया था. इवन दैट फीमेल सेड नहीं, गलती से पी लिया, एंड डॉक्टर्स पोस्टपोन्ड टू डू एमएलसी. By evening 6 o'clock, suddenly patient become critical and patient died. Naturally, एमएलसी नहीं किया था तो डॉक्टर के मन में डर बैठ गया कि I have something somewhere violated the law. I may be troubled. He has sent body for the postmortem. Naturally, he called some of the friend. उन्होंने एडवाइस किया, why don't you speak to advocate? प्रॉब्लम क्या था कि एडवोकेट वर नॉट अवेयर अबाउट द मेडिकल सेक्शंस. सो नेचुरली एडवोकेट एक नॉर्मल टर्म में उनको बोला कि एक काम करो, लाख रुपए भेज दो और आप यहाँ से निकल जाओ. Tomorrow I'll file you an anticipatory bail for you. And then naturally with all fear psychosis process करके he left the town. Next day somewhere he got my number. When he called me, I was really utter surprised that for such a frivolous things why he need to run here and there. I called him back. To all you my friend, I don't say that you don't do MLCs, but by and large if at all you failed, because बहुत सारे केसेस 3 महीने बाद आएंगे. जो डोमेस्टिक वायलेंस की फीमेल आपके पास आई थी उसने बाद में जाके कंप्लेन किया और पुलिस आप बोले 3 महीने पहले आपने क्यों नहीं बताया. ऐसे बहुत केसेस आएंगे आपके पास. लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि नहीं जानबूझ के तो नहीं किया आपने एमएलसी, लेकिन नहीं करने से व्हाट हैपन, आईपीसी का सेक्शन 176 अट्रैक्ट करता है जिसके अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट इज 1000 रुपीज और 1 मंथ जेल. बेलेबल ऑफेंस, नथिंग हैपेंड टू माय डॉक्टर. पुलिस उस पर ध्यान भी नहीं देती. लेकिन क्या होता है कि नॉट हैविंग अ नॉलेज हैज कॉज्ड द फियर टू दिस डॉक्टर. एंड सिमिलरली आपका प्रेजेंटेशन अगर कोर्ट में अच्छा हो, you are not going to lose the case. Let me give one more example to make you understand that. There was a case of hair transplant surgeon, hair transplant done by MBBS doctor, and is the Telangana case. उसको necrosite fasciitis हो गई, 2 महीने हॉस्पिटल में रहा, बच गया, but he lost one eye. And in that domain, तेलंगाना मेडिकल काउंसिल को कंप्लेनेंट ने ये बोला कि ये फील्ड प्लास्टिक सर्जन की है, ये फील्ड डर्मेटोलॉजिस्ट की है, MBBS नहीं कर सकता. This and Telangana Medical Council has suspended his registration for 2 years. When this matter came to me in Mumbai, I argued the matter in Hyderabad High Court. I immediately got a stay on the order of Telangana Medical Council. I appraised the apex body. और वहां एक ही चीज मैं सभी डॉक्टरों के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मेरे को चैट बॉक्स में दिख रहे थे कि स्पीक अबाउट सब आयुर्वेदा रूल्स, स्पीक अबाउट गायनिक प्रैक्टिस. दैट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू स्पीक ऑन दैट इन क्वेश्चन आंसर सेशन. लेकिन ये केस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई मीन टू से व्हेन आई टॉक अबाउट OBGY cases of PG student of Ayurveda of Uttar Pradesh also, of any Pradesh also, because some Uttar Pradesh question came to me. I could able to read in chat box for that doctor also. This case is going to be important because case koi bhi ho, it impacts to all the people. I have argued the matter on the basis of Medical Degree Act to MCI. I said that very clearly 5 ingredients which are needed practically to allow someone to practice something, in which the first and very important thing is the medical record. It must be in syllabus. If it is in syllabus, no one can stop you to practice that. So it must be in syllabus. And that's the reason why when NCIM has issued a notification of allowing surgeries by PG student of there, because there was in syllabus. If not in syllabus, because they are governing the syllabus. So if it is in syllabus, no one can stop you. That is the ground of practicing something. Secondly, there should be Viva exam, practical exam, theory exam, and fifth and very important is a hand-on training on that. These are very, very ground to practice something in a particular speciality. If you got that thing, I could able to argue this matter to MCI. I said in 2003 when first time amendment were done by MCI, 2002-2003, where Schedule C was brought about anesthetic, pediatric, and then gynecologist and plastic surgeon and XYZ. In 2003, there was no cosmetic surgery at all. The growth of cosmetic happened in the last 15-17 years. There was no hair transplant surgery at all. So there was no one to give a category of a cosmetic surgeon and hair transplant surgeon. And remember, those days,
prior to the amendment, MBBS were allowed to do anything and everything. Every specialty were allowed to them. So when there is no category of a cosmetic and hair transplant, MBBS are still allowed to do hair transplant, or you amend your schedule. Believe me, my friend, only on argument, I got favorable result when MCI, those days now NMC, the Board of Governors has very categorically said that MBBS can do hair transplant. So that is a very basic ground of practicing. Now coming down to Ayurveda people or a student of NCM, let it be a gynec people. Let me give some insight on that. As I already spoken on MAP Act 1961, which got amended because of your efforts in 2014, and Section 25 has amended 4 and 5, have given a blanket support to you, my friend. Blanket support. See, I'll remember one thing. हम अभी भी नोटिफिकेशन की बात करते हैं, भूल जाओ नोटिफिकेशन, क्योंकि एक्ट नोटिफिकेशन से बहुत ऊपर है. नोटिफिकेशन कब आता है? जब एक्ट अमेंड नहीं होता या एक्ट नहीं आता. इन absence of act, in absence of law, notification is for the purpose of regulating the things. Now you are already having an act. अभी notification की जरूरत भी नहीं है. In Maharashtra, I'm talking about Maharashtra, same may be allowed in multiple states, which NIMA people knows every state where all is allowed and where not allowed. You are already fighting for the same and you are already doing all the things. लेकिन मैं उन चीजों को बता रहा हूं कि एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करना बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि एक्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है. सुप्रीम कोर्ट भी एक्ट को मानेगा ही. अल्ट्रा वायरस होगा तो जाके विशिएट कर सकता है. गिविंग अनदर एग्जांपल व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट. आपने देखा सीसीआईएम ने सर्जरी के लिए 58 सर्जरीज अलाउ किया. सर्जन्स होल्डिंग पीजी डिग्री इन आयुर्वेदा. अब ये तो पैरेलल बॉडी है, कोई सुपीरियर और इंफीरियर तो है नहीं. आपका एनसीआईएम, एनएमसी, एनसीएच, होम्योपैथिक काउंसिल और डीसीआई, ये चारों पैरेलल बॉडी है. कोई किसी की सुपीरियरिटी नहीं है, सब इक्विवेलेंट है. हर एक के रूल्स, हर एक के नोटिफिकेशन इक्विवेलेंट है. एनएमसी कभी भी एनसीआईएम के नोटिफिकेशन को ओवर रूल नहीं कर सकती. अगर उनको अल्ट्रा वायरस लगता है तो एनीवन कैन अप्रोच कोर्ट टू से दैट इट इज अल्ट्रा वायरस. और उसी ग्राउंड पे आपने देखा एएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया. इट इज नॉट एनएमसी, एक बॉडी थी एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट की, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया और जो अभी तक पेंडिंग है. सिमिलर ग्राउंड में अगर आपने देखा अमेंडमेंट जब किया गया था 2014 में, तो आईएम में पुणे ने केस फाइल किया मुंबई हाई कोर्ट में होम्योपैथिक डॉक्टर को फार्माकोलॉजी कोर्स को अपोज करने के लिए. एंड नेचुरली उसमें फिर उन्होंने आयुर्वेदा के अमेंडमेंट को लिया कि अल्ट्रा वायरस क्रिएट करो. आई वॉज देयर एज ए एडवोकेट फॉर एमसीएच. आई आर्ग्यूड दिस फॉर लास्ट 14 से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनको स्टे दिलाने का काम किया. देन आई लेफ्ट दैट पर्टिकुलर एसोसिएशन. लेकिन कोई भी नोटिफिकेशन हो, या जैसे नोटिफिकेशन में बोलूंगा जो सीसीआईएम ने दिया था, उसको अगर अल्ट्रा वायरस चैलेंज करने के लिए उनको कोर्ट में जाना पड़ता है. और फिर वेरी ग्राउंड ऑफ आर्ग्यूइंग द मैटर इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, मैं फिर से आपको बोलूंगा कि इज योर सिलेबस. क्योंकि जिस चीज को पढ़ाया गया उसकी प्रैक्टिस का अधिकार है, आपको कोई रोक नहीं सकता उस अधिकार से. और कंट्रोलिंग बॉडी भी आपकी है. और अगर आप सीसीआईएम बोल रहा है नाउ एनसीआईएम, तो हु कैन चैलेंज? और अल्टीमेटली कोर्ट कोई रूल्स रेगुलेशन में आता है. नाउ कमिंग टू OBGY is also fighting a lot. I've heard lots of application is made, lots of activities going on. It has already been in a discussion with NCIM, already there is a process. And very soon you may also get a beautiful notification of allowing the things which you need to be. But in a Maharashtra, yes, in Maharashtra, if I get any opportunity to argue any matter of a PG Gynec student of Ayurveda, I can bet of winning the case only on the ground, only one ground, and that is your provision 5 of section 25 of MMP Act 1961. I'm talking about Maharashtra per se. Reason behind that, you go and read so beautifully construed by the lawmaker. Please read that. That is your life. Very clearly said, it covers all latest technologies. Word used means all latest technologies.
अब वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या आता है आप सोच लो, लेप्रोस्कोपी आ गया आपका, मतलब बहुत सारी चीजें आ गई। इट कवर्स लेटेस्ट नॉलेज विच पीपल हैव गॉट। अब इससे बड़ा क्या लिखना चाहिए? वर्ड को तो इंटरप्रेट करना आना चाहिए। लॉयर इज देयर टू इंटरप्रेट द वर्ड, and court of law, that word get interpreted by good lawyers, and then they can interpret the knowledge in any way, in any theme, any ground. They can interpret latest technology in any way they want. So सब कुछ तो दे दिया है, सर्जरीज दे दिया, एंड बचा क्या है? एक्ट ने दिया है। तो क्यों अगर कल को एनसीएम से नहीं भी आ रहा है तो एक्ट ने तो परमिट ही किया है ना, महाराष्ट्र के लिए तो परमिटेड है। No one can challenge you doing delivery, no one can challenge you LSCS, no one. The only thing that you need to be presented well in a court whenever such a cases comes to you, because that makes, or otherwise कोई अल्ट्रा वायरस करने के लिए चैलेंज करने जाए। So when I talk about defenses part to all my people here sitting, let me conclude in few minutes, because other speaker of mine is waiting and I don't want to take his time. I'm sorry, but I'll just conclude in another 5-10 minutes. Priyanka madam and Archana madam and Shinde sir, in just 5-10 minutes. By talking about little defenses में मैं आपको फिर से बोलूंगा, the best defense every doctor need to follow is maintaining a medical record. Please prepare your medical record properly. Medical record is the written version read in a court properly in every court. अगर आपके राइटिंग में लिखा है तो ओरल को तो कोई पूछता नहीं। मैं आपको 2 केसेस शॉर्ट में बता दूंगा। एक केस के अंदर लेजर सर्जरी की थी हेयर रिमूवल के लिए लेडी की, and उसको स्किन बर्न हुआ। She went to the court. Argument done by the center, the doctor, कि मैंने कंसेंट पेपर के अंदर बहुत ही क्लियरली लिखा है कि पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन इज स्किन बर्न रेडनेस, एंड द लेडी हैज रेड एंड साइंड, हैज गॉन इन फेवर ऑफ अ डॉक्टर राइटिंग। अदर केस में लंबर पंचर का केस था, एलपी किया था न्यूरो सर्जन ने। द ब्रदर ऑफ दैट लेडी हु डाइड हैज एलेज्ड बिकॉज ऑफ ब्रेन हर्निया कि भाई इनह्यूमन ट्रीटमेंट दिया गया मेरी बहन को। जब ये प्रोसीजर किया रहा था तो चिल्ला रही थी पेन से, शी वाज शॉटिंग विद द पेन। व्हेन आई रश्ड एंड सीन अ प्रोसीजर रूम, डॉक्टर वाज इंजेक्टिंग समथिंग ऑन हर बैक एंड 2 people were holding, causing a pain is also in deficiency in service. एंड कोर्ट को मेरे डॉक्टर ने प्रेजेंट किया कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट है, मैंने लोकल एनेस्थीसिया दिया था। लेकिन जब मेडिकल रिकॉर्ड देखा गया तो इट वाज सरप्राइज दैट कि डॉक्टर ने तो एलए दिया था लेकिन पेपर पे लिखा नहीं था लोकल एनेस्थीसिया, and in that case it is deemed that he is not given and gone against him. So writing plays a vital role. My friend, whatever you communicate to the patient, please document it. अगर आपने documentation proper किया, nothing is good. One more thing, let me tell you, documentation का एक और meaning है, not to document which need not be needed. मेरे पास गायनिक का ही केस था जहां पेन लाने के लिए पिटोसिन का लिमिटेड यूज 1 और 2 एमप्यूल गायनिक ने लिखा था और सिस्टर ने 5 दे दिया था या 6 दे दिया था, एंड बच्चों गॉट सम डिफॉर्मिटीज। कहीं तो भी इंटरनेट से फाउंड किया कि तो ओवरडोज ऑफ दैट, सम किसी गायनिक ने दूसरे ने बता दिया, ओनली ऑन दैट बेसिस ओवरडोज। एंड क्योंकि इंडियन रजिस्टर में लिखना पड़ता है इसलिए नर्सेस ने लिखा था इतना यूज किया है, ओवरडोज। मेरे पास केस है जहां वेनकोमाइसिन इंजेक्शन इन सेप्टिसीमिया के केस में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ने 2 ग्राम 3 टाइम्स अ डे प्रेस्क्राइब कर दिया था, पेशेंट का तो डेथ हो गया, लेकिन एफडीए गाइडलाइंस में 2 ग्राम अ डे है, 6 ग्राम अ डे पुट किया गया था। पेशेंट ने न्यूरोटॉक्सिसिटी रेफरेंस करके उसके ओवरडोज का लिटरेचर सबमिट करके 1 करोड़ का केस डाला। सो व्हाट नीड नॉट बी डॉक्यूमेंटेड आल्सो इज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। सेकंड डिफेंस, आई विल स्ट्रांगली एडवाइज टू हैव अ प्रोफेशनल इंडिमनिटी पॉलिसी। मैं डॉक्टर्स रिस्क मेडिको लीगल की तरफ से न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को, गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी, आई ऑलवेज स्ट्रांग, आई बिलीव इन गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी। प्राइवेट वाले को डिनाई करना बहुत इजी है, प्राइवेट वाले रिजेक्ट बहुत इजीली कर देते हैं। आपका प्रीमियम देखते हैं, उनका नुकसान क्या होगा, उतने प्रीमियम का इस पे आई डोंट बिलीव। मैंने गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी को कन्विंस किया, न्यू इंडिया को, और एक ऐसी ब्यूटीफुल पॉलिसी आप लोग के लिए डिजाइन की है जो आपके पीजी गायनिक के लिए भी अवेलेबल है और आपके यूजी डॉक्टर बीएमएस डॉक्टर के लिए भी अवेलेबल है, बीएमएस फील्ड के लिए एकदम लोएस्ट कॉस्ट में, जिसके अंदर 1:1 है, मतलब 1 केस 1 करोड़ का हो या 10 केस 10 लाख के हो या 20 केस 5 लाख के हो, सब कवर्ड है। उसके अंदर लीगल फीस कवर्ड है अक्रॉस द कंट्री, आपको एडवोकेट के चार्जेस अलग से नहीं देने हैं। उसके अंदर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का ऑप्शन जानबूझ के रखा है क्योंकि रेपुटेशन मेरे डॉक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है।
और मैं नहीं चाहता मेरे डॉक्टर का रेपुटेशन जाए, तो इनडिफेंसिबल केसेस में दे आर रेडी टू सेटल। उसके अंदर कैशलेस फिनोमिना फर्स्ट टाइम डाला है। कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको कैशलेस नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि 50 लाख रुपए का आ गया और मेरे डॉक्टर को 50 लाख भरना पड़ा और बाद में रियम्बर्स करने की नौबत आएगी तो बहुत डिफिकल्ट है। कैशलेस होने से इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट पे करती है ऑर्डर आने के बाद। वो एक पॉलिसी है जिसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज कवर किया है, लेसिक हो, लेप्रोस्कोपी हो, ऑनलाइन कंसल्टेशन हो, सब कवर किया है। वो एक ही पॉलिसी अवेलेबल है कंट्री के अंदर, जिसके अंदर ऑल कॉस्मेटिक वर्ड मेंशन किया गया, ऑल कॉस्मेटिक वर्ड। तो ऑल कॉस्मेटिक वर्ड भी उसके साथ कवर्ड है। टेली कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म तो ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी तरफ से फ्री ऑफर किया है, क्योंकि टेली कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म फ्यूचर है इंडिया का। आप अक्रॉस द कंट्री पेशेंट को कनेक्ट हो सकते हो और पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो। दैट इज टेली कंसल्टेशन प्रोग्राम। डायरेक्ट डॉग करके है, कंप्लीट वेलनेस करके है अवेलेबल आपके लिए। डायरेक्ट डॉग भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, कंप्लीट वेलनेस भी आप डाउनलोड कर सकते हो और फ्री ऑफ चार्ज यूज कर सकते हो अपने पेशेंट को कनेक्ट करने के लिए। थर्ड डिफेंस, और ऐसी पॉलिसी doctorsrisk.com पे मिल जाएगी, डॉक्टर रिस्क के वेबसाइट पे मिल जाएगी, एंड माई रिक्वेस्ट दैट एवरी डॉक्टर मस्ट गो विद दैट। थर्ड डिफेंस, मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स। मैं हमेशा बोलता हूँ आपके पास तो नितिन कोतले जैसे और बहुत लोग हैं जो इस फील्ड में अपने आप को भावने जैसे बहुत लोग आप लोग को अवेलेबल हैं। ऐसे लोगों का नंबर फिंगर टिप पे रखिए। बिलीव मी माय फ्रेंड, जिस वक्त होता है पेशेंट ने मेडिकल रिकॉर्ड मांगा, मेरे साथ बहुत बार अनुभव हुआ है, ये लोग या मेरे को कॉल कीजिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर माय पीपल, आई नेवर से नो टू माय डॉक्टर्स व्हिचएवर स्पेशलिटी पैथी हुएवर इज देयर। कॉल कीजिए मेडिको लीगल एक्सपर्ट को, मेडिकल रिकॉर्ड को ऑडिट कीजिए बिफोर यू हैंड ओवर टू द पीपल, बिकॉज उसी के अंदर तो केस चलना है। आईपीडी पेपर, ओपीडी पेपर, इसका मेडिकल रिकॉर्ड, इन चीजों को प्री लिटिगेशन सपोर्ट में मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स आर मास्टर टू यू। आंसर और नोटिस सच वे दैट कोर्ट पे जाए ही नहीं, ड्यूरिंग लिटिगेशन टेबल डेथ हो जाए, बिल्कुल डरना नहीं है। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, आपका पेपर एक्सचेंज कीजिए मेडिको लीगल एक्सपर्ट से, प्रॉपर बना लीजिए, उसके बाद डेथ डिक्लेयर कीजिए। उनसे पूछिए हाउ टू डिक्लेयर अ डेथ, व्हाट आर द मोडालिटीज एंड हाउ वी कैन गिव। Talk to the medical legal expert. They are the person who can really safeguard you. Post litigation, my friend, drafting documentation बहुत जरूरी है कोर्ट ऑफ लॉ में। आप जहां अटकते हो वहां मेडिको लीगल एक्सपर्ट है, क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, एडवोकेट बैकग्राउंड के हैं, दे आर द बेस्ट पीपल टू आर्ग्यू द मैटर, ड्राफ्ट एंड डॉक्यूमेंट, डू एनीथिंग। माय फ्रेंड, एक ही चीज याद रखना, केस नहीं होना ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि केस हो गया तब इंडेमनिटी पॉलिसी काम आएगी। इंडेमनिटी पॉलिसी तो पहले काम नहीं आती। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, हम लोग सोशल मीडिया के एज में है, एरा में है। अगर आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड होता है तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट। और पब्लिक डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पे किसी ने भी डाल दिया और सिर्फ आपका नाम डॉक्टर स्नेहा करके किसी ने डाला, तो सबसे पहले आपका केस आएगा और आपका रेपुटेशन स्टेक में रहेगा, और आप नहीं चाहोगे ये होगा, क्योंकि इरिपेरेबल लॉस है। तो पहली कोशिश हमेशा रखना लाइफ के अंदर कि डोंट एवर think of getting cases against you, और उसको अवॉइड करना है तो you need to have a medical legal expert। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मेरे ख्याल से नितिन कोतले सर का तो नंबर हर एक के पास होना चाहिए। Years of practice in this particular field। आपके यहाँ और बहुत सारे लोग हैं मेडिको लीगल में, मैं तो हमेशा ही हूँ आप लोगों के साथ, मैं तो कभी भी आपको आधी रात को भी हेल्प करने को तैयार हूँ, मुझे कॉल आया तो। बट हैव अ मेडिको लीगल एक्सपर्ट। थर्ड डिफेंस, फोर्थ डिफेंस, अपग्रेड योर लॉ नॉलेज। I am thankful to the NIMA platform of OBGY. I am thankful to Priyanka ma'am, Archana ma'am, Shinde sir, and all the dignitaries here, and all the management, especially President of NIMA, Timburkar sir, and all the Padadhikaris for making their people to get connected to me to share my experience. I am sure कि कुछ न कुछ तो knowledge का upgradation आपका हुआ होगा. So knowledge definitely is going to help you. तो अपने knowledge को जब भी मौका मिले आप अपग्रेड कीजिए। मेरे खुद के सेशंस खाली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर 12 सेशंस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे डॉक्टर्स रिस्क के, जहां मैंने ओपीडी पेपर पे ही 2 सेशन लिया है, आईपीडी पेपर पे 4 सेशन लिया है, कंसेंट के ऊपर 2 सेशन लिया है, वेयर आई हैव स्पोकन अ लॉट अबाउट मेडिकल रिकॉर्ड। अपग्रेड कीजिए कंसेंट, क्योंकि मनचंदा के केस के बाद कंसेंट का लॉ हमारे कंट्री में सेटल हो गया है। रियल कंसेंट, इन्फॉर्म कंसेंट की बहुत बातें हुई है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, कंसेंट की 4 चीजें हमेशा याद रखिए। यू नीड टू इन्फॉर्म द बेनिफिट ऑफ द procedure you are going to do on a patient with naturally procedure itself. Secondly, complication if at all any. Third, alternative, अगर आप मान लो सीजरियन बोल रहे हो और अल्टरनेटिव आपके पास है वैक्यूम डिलीवरी या फोर्सेप डिलीवरी, तो बताओ और उसका कॉम्प्लिकेशन बताओ। और पेशेंट अगर तीसरा चूज करता है और आपका मेन नहीं चूज करता है
तो फोर्थ इज रिफ्यूजल कंसेंट। ये 4 चीजें रहनी चाहिए कंसेंट पे। 3 सिग्नेचर मैंडेटरी है कंसेंट पे, आपकी सिग्नेचर बीइंग अ डॉक्टर, पेशेंट की सिग्नेचर एडल्ट ओरिएंटेड है तो, थर्ड विटनेस की सिग्नेचर जो अपना होना चाहिए, फोर्थ अगर ट्रांसलेटर है तो ट्रांसलेटर की सिग्नेचर। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कंसेंट के। तो मेडिकल रिकॉर्ड पे फोकस कीजिए। प्रोफेशन इंडेमनिटी पॉलिसी डॉक्टर्स के पास न्यू इंडिया के साथ टाई अप की पड़ी हुई है। थर्ड, मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स की सर्विसेज लीजिए, जो आपको डिफेमेशन की नोटिस भेजने के लिए भी काम आता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई करे, आप नोटिस नहीं भेजो तो रिव्यू नहीं करेगा। लॉ है, आप उसका यूज उठाइए। डिफेमेशन क्रिमिनल फाइल किए, हमने किया है, हमने रिजल्ट देखा है उसका, तो डिफेमेशन नोटिस भेजिए। आपको चाहिए तो रिकवरी तक की नोटिस के लिए आप उनको बोलिए कि भाई पेशेंट ने पैसा नहीं दिया, नोटिस भेज दो, कम से कम आधा तो देके जाएगा। रिकवर कीजिए आपका पैसा। आपके वेंडर्स ने आपको चीट किया, वेंडर को नोटिस भेजिए। आपके मेडिको लीगल एक्सपर्ट पड़े हुए हैं ना, व्हाई डोंट यू यूज देम टू टेक एन एडवोकेट के पास जाओगे तो 10-15 हजार ले लेगा। बेटर है कि आप मेडिको लीगल एक्सपर्ट के साथ जुड़िए और यूज कीजिए। एंड लास्ट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पे मैं बाकी कम्युनिकेशन की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि वो सबको पता है, पीर से बात करना है, इनसे बात करना है। मैं आपको कम्युनिकेशन की बात करता हूँ कि पैरामेडिकल स्टाफ, क्योंकि मेरे पास लेटेस्ट पास में जितने केसेस आए हुए हैं, बहुत सारे केसेस आए हुए हैं जो एटीट्यूड, बिहेवियर आपकी इस पेशेंट की वजह से लिटिगेशन में गए, आपके ट्रीटमेंट की वजह से नहीं गए। पेशेंट तो आपसे खुश होकर जाता है, लेकिन आपकी आया बाई ने उसको चिल्ला दिया, या वार्ड बॉय ने बोला आता भेटायचं वेळ नाही, आता कसं येता, दैट ईगो हर्टिंग, इट इज गोइंग टू बी ट्रबलसम टू योर पीपल। तो वो चीजों का आप ध्यान रखिए, ट्रेन कीजिए इनको। अगर आपने इनको ट्रेन किया तो बिलीव की आपके साथ कुछ नहीं होगा। माय फ्रेंड, बताने के लिए बहुत कुछ है, but I don't want to take another time with this. Again, repeating the things: criminal liability, never to worry. Civil liability, have a professional indemnity policy from doctor's risk. And medical counsel, never ever get terrified. Having a good people with you are going to save you. Defenses may have a good medical record keeping, have a professional indemnity policy, have a medical legal expert on the fingertip. Upgrade your medical law knowledge. Good communication can save you. I really thank you, all the management people of OBGY and NIMA Special President, sir, and all secretaries here, all the dignitaries and all management people of OBGY and NIMA per se. You are all doing a great job for the people of your, for whom you have surrendered everything. I really appreciate your work, and please go and continue doing as a NIMA banner all the good thing. I really thank all the people. I think OBGY, Priyanka ma'am, Sujit Shinde sir, Archana, and all the delegates who have allowed me to speak here for almost 1.5 hours. So thank you very much. And anytime you can interact with me, the question answer, either after the session of my second person who may be waiting for a longer time, and then we can have a question answer. I am going to be with you till the time you are here. So not to worry, I am not going to run away. So you can keep question later also. You can ask me earlier also. I am definitely with my knowledge going to help you all. So thank you very much. I stop here. Thank you. Wonderful lesson, sir. It's quite informative, and I'm thankful for this. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Arun Mishra, sir, for this very important and knowledgeable talk. It was indeed a very informative session, sir. I just want to confirm, has Dr. Manish Majwe, sir, joined? No, ma'am, Manish Majwe is not joining. He is stuck somewhere in the case. So we will start with the question answer. Yes, sir. Yes, sir. Just a minute, Sujit. I will request Dr. Arun Mishra, sir. Would you like to take the second subject? Kindly mute your device. I would like to request everyone to please mute your device. Can you invite me with second session का topic? So I'll speak on that topic for some time. हमारे मनीष सर का टॉपिक क्या था? लिटिगेशन, how to reduce the litigation. Yeah. Okay, I'll give insight on that. हाँ, बोलिए ना मैडम. Yes, ma'am. कुछ बोल रहे थे आप? प्रियंका मैडम. Yeah, would you like to carry with that topic? I'm okay with any topic. You can go with that. So there are a lot of question answers right now. Or you take a question answer. During that, I will take that topic also. Okay. So whenever such question comes, I will speak on how to reduce litigation. Yeah. Reducing a litigation or winning the cases in the court of law. I'll touch upon that. And मैं आपको बता दूं, देखो, world is changing. One thing before you go for the question answer, Sujit sir, मेरा personal feeling मैं आपको बता रहा हूँ.
मोदी गवर्नमेंट का बहुत ही क्लियर है कि लोकल लैंग्वेज इज गोइंग टू डोमिनेंट फॉर ऑल द रिसर्च वर्क इन द कंट्री, एंड एवरी कंट्री हु हैज ग्रोन इन दिस वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ डोमिनेंस ऑफ देयर ओन लैंग्वेज. एंड आपने देखा चाइनीज ही बोलते हैं, जापानीज ही बोलते हैं, एंड दैट द रीजन their mind works very fast because they are not changing over their language. And we have seen in the recent past the greatest change in the country where MBBS course भी है वो हिंदी में लॉन्च हो गया. हम तो कई सालों से देख रहे हैं. कहने का मतलब कि हमारे बहुत ही खुल के क्वेश्चन पूछेंगे अगर आप उनको परमिट करो कि भाई हमारे लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे, तो शायद और खुल के वो बात करेंगे, क्योंकि डेलीगेट जो आए हुए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बहुत लैंग्वेज का हिंड्रेंस नहीं है. मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है. So there is no barrier or no restriction on any language here. नहीं, हम इंग्लिश में बात करते हैं तो उनको लगता है हमने इंग्लिश में पूछना. सॉरी लेकिन कंटिन्यू विद दैट. It's about knowledge. So thank you very much. तो जिनको जो हिंदी चाहिए तो हिंदी कंफर्टेबल है तो हिंदी में कुछ पूछ सकते हैं. Any language, Marathi is also no issue, Hindi is also no issue, English I am very okay. Anytime we can go with our language. मुझे एक पूछना था, ऑडियो विजुअल जो कंसेंट रहती है सर, ऑडियो विजुअल जो कंसेंट रहती है, इज इट मैंडेटरी और सपोज्ड टू बी टेकन, और ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस क्या है जिसमें ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग कंसेंट चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन सुजीत. लेट मी गिव अ इनसाइट टू ऑल द पीपल. मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है टू ऑल द माय डॉक्टर्स दैट if you are taking a visual audio consent, it is anytime supportive to you, but as per the law, let me tell you one thing: audio visual consent does not have evidentiary value in a court of law unless it has been certified by the forensic team. Audio visual consent is a very good piece of a consent for the purpose of investigation and influencing the investigator per se. Let me give you one example of Palghar, this BMS doctor running a hospital in Palghar, very famous hospital, and he has admitted a patient for MTP, called a gynecologist to do MTP. Consent के अंदर उन्होंने देखा कि consent was given by that lady, that she is of 19 years age. Look also was 18 plus. Physically she was looking 18 plus. And she has given a consent that her age is 19. On a visual, it has been recorded. Mother was saying that she confirmed that she is 18 plus. No other document was there to prove that uska age kya hai. And on the basis of that MTP kiya gaya, बाद में rape case registered हुआ, and उसका living certificate जमा किया गया कोर्ट के अंदर, जो कि 16 साल का या 15 years 9 months का था. And my doctor was booked under 313, क्योंकि lady का consent was invalid consent being a minor, and various other sections in MTP. When I got to take a bail, उसके लिए मैं bail लेने गया था पालघर सेशन कोर्ट में. I argued the matter. There, first time I have utilized the CCTV footage, the CD, which I presented to the court, and I said that CD के अंदर बहुत ही clearly narrate किया है girl ने कि my age is 18 plus. Mother has reconfirmed that age is 18 years. And CD जाके सेशन कोर्ट के जज ने देखा, and I got a bail in 313 also of that doctor. So audio visual consent definitely आपके फायदे का और आपके लिए बहुत यूजफुल है. आप उसके लिए जरूर लीजिए, लेकिन जब एविडेंटरी वैल्यू आएगा तो we can definitely with a forensic expert we can take a certification. और सेकंड सर, क्योंकि वॉइस ओवर होता है, मेडिकल ओवर होता है, इसलिए उसको एविडेंटरी नहीं मानते. सॉरी. Yes, Sujit. Sir, medically it is mandatory to have a male or female attendant while checking male mandatory word नहीं है, mandatory नहीं है, but advisable है. मैं नहीं खाऊंगा. क्योंकि फीमेल को चेक करते हो ना, तो बहुत बार केसेस अगेंस्ट जा सकते हैं, मोलेस्टेशन की, बाकी चीजों की. तो आपके उसको विटनेस नहीं रहता. मैं आपको एक केस बताता हूँ, बीएमएस डॉक्टर का है, आपके वसई विरार साइड का है. कोई फीमेल आई थी इसके पास 19 प्लस की, वाइट डिस्चार्ज या सब कंप्लेन रहा होगा, गायनिक का कंप्लेन था. डॉक्टर ने तो बोला मैंने पीवी किया था, लेकिन गर्ल ने रेप केस डाला कि दैट टच वाज
not a normal. It was fingering. और आप लोग को शायद पता होगा 2013 में अमेंडमेंट हुआ है लॉ का, रेप लॉ का, और 2013 में जो अमेंडमेंट आया उसके अंदर इंसर्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन अ प्राइवेट पार्ट इज सेड टू बी रेप. पहले कहा था इंसर्शन ऑफ पेनिस था, बाद में उन्होंने अमेंड करके दिया इंसर्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. सो इन फिंगर इज सेड टू बी ऑब्जेक्ट. हल्का का केस में पहला केस हुआ था हमारे कंट्री में, जो लिफ्ट के अंदर फिंगरिंग किया था, और ये डॉक्टर को रेप केस में अरेस्ट किया गया. और चूंकि विटनेस कोई नहीं था तो डॉक्टर तो सेफगार्ड कर ही नहीं सकता था अपने आप. तो जब आप फीमेल को एग्जामिन करते हो तो नाउ बिकॉज सोसाइटी डिमांड्स, आई कैन डेफिनेटली से मैंडेटरी वर्ड, आई विल डेफिनेटली कोट दैट मैंडेटरी वर्ड फॉर यू, बट इट इज डेफिनेटली एडवाइजर टू हैव अ फीमेल अटेंडेंट फॉर योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. नहीं तो झूठा केस होते रहेगा, आप लड़ते रहोगे. यस सर. Yeah, sir. Sujit, sir. Any other question? 1 minute. I just want to announce one thing. Please, everyone, I request everyone to please mute your device. It is quite disturbing to everyone. Please mute your device. Hello. हाँ सर, बोलिए ना सर. सर आपने कहा था कि क्रॉस ऑफ द लिमिट क्रॉस करना. अगर जनरल सर्जरी हिस्टेक्टोमी करता है, इट कम्स अंडर इट्स जुरिडिक्शन और अदर थिंग. while doing hysterectomy, some gynecologists perform appendicectomy if it is indicated. But whether gynecologist... Good question. I'll answer to that question. It's a beautiful question and it's good for all the people because I'm going to speak a law. Whatever I'm going to speak a law. As I said, if you remember very properly, that all four bodies are equivalent, but not superior or inferior to each other. When I talk about NCIM, when I talk about NMC, when I talk about Homeopathic National Council, if I talk about Dental Council of India. अब ये जो लॉ है आपने जो बोला अभी सुजीत सर, दैट वाज अप्लीकेबल टू मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर. मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर का जब उन्होंने शेड्यूल लाया था 3 का, तो उन्होंने क्रॉस स्पेशलिटी बैन किया. क्रॉस स्पेशलिटी बैन करने की वजह से, क्योंकि उनको अपने डॉक्टरों को सेफगार्ड करना था कि गायनिक कैन नॉट क्रॉस ओवर एनेस्थेटिक फील्ड, एनेस्थेटिक कैन नॉट क्रॉस ओवर. तो अगर आप मॉडर्न मेडिसिन में देखोगे, देयर वाज अ ब्यूटीफुल जजमेंट केम इन केस ऑफ धनाका के केस में क्या हुआ था, thoracic surgeon has operated because there was a mass found in thoracic region of a patient admitted, तो उसकी फील्ड हो गई. लेकिन जब उसने ओपन किया केस, तो turned out to be fibroneuroma, एंड उसकी वजह से क्या, डिसेक्शन के टाइम पे ही इंजर्ड द स्पाइनल कॉर्ड और पेशेंट को पैराप्लेजिया हुआ. पैराप्लेजिया होने के बाद तो पेशेंट ने सुप्रीम कोर्ट तक केस किया, 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मिला उसको. लेकिन उस केस के अंदर एमसीआई के रूलिंग को प्रेजेंट किया गया और तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि नॉट बीइंग अ न्यूरोसर्जन, इफ thoracic surgeon has operated neural part, then neurosurgeon must have been there as a standby, and since not followed, it goes against the doctors. तो बोला क्रिमिनल केस रजिस्टर करना चाहिए ऐसे लोगों पे. That was a case with modern medicine. लेकिन अगर आप एनसीआईएम के लॉस को पढ़ो, पीजी के स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन शेड्यूल में आ गया है, एडिशनल क्वालिफिकेशन आ गया है, लेकिन अभी तक ऐसी रूलिंग क्लियर कट नहीं आई है कि क्रॉस स्पेशलिटी प्रैक्टिस इज बैंड. इन सच केसेस, कल को मेरे पास केस कोई आता है तो आई कैन आर्ग्यू ऑन द मैटर दैट माय ओन स्पेशलिटी, यस, एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस डोमेन. स्टैंडर्ड प्रैक्टिस डोमेन मतलब जिसके अंदर मेरी एक्सपर्टाइज है, वो चीजें अलग हुई. सेकंड चीज जो मैंने आपको याद रखा, वो आपको रिपीटेडली बोला, सिलेबस. जब एडिशनल क्वालिफिकेशन के अंदर सिलेबस की बात आएगी तो गायनिक का सिलेबस और सर्जन का सिलेबस वाइडली डिफरेंट हो जाएगा. और जब वाइडली डिफरेंट हो गया और कल को सिलेबस में ही वो चीजें नहीं टॉट की गई है, तो फिर डिफेंस वीक हो जाएगा. लेकिन एज पर द लॉ ऑफ क्रॉस स्पेशलिटी, डायरेक्टली आप ब्लॉक्ड नहीं हो, बट एज अ लॉ ऑफ प्रेजेंटिंग anything for practicing as a law made in Medical Degree Act, if you're not in syllabus and then cross over the field, then question definitely is going to come to you for violating the law. What about the physician fitness?
prior to surgery, one thing. And second thing, during ANC, we get a lot of patients from which needs a medical disease, thyroid, hypertension, PIH. Is there any mandatory to take a physician's opinion? Yes, I'll tell you, because the laws, if you remember the knowledge component, I have emphasized much when I was talking about 304 part 2. Now, patient has given a history of ISG to you, clear history of hypertensive drug. Then it is your duty, because I've got multiple cases in respect to the same. It is your duty to take a fitness form. Such a physician who on the basis of investigation can give the opinion that she is fit for the surgery. I have got a case where X-ray was showing bulle and surgery was done by a hospital, not taking a fitness. Even the patient is given a history of past respiratory disease. Patient bulle got busted during the surgery when anesthesia was, when it was not given, and patient died, has gone for multi-crores in court of law. So medical fitness definitely become mandatory as a due care word, repeatedly said in every judgment, due care. So due care word very clearly indicate that all the possible care is taken by the doctor prior to the surgery. वो भले कोई डिजीज हो, थायराइड हो, कुछ भी हो, अगर पेशेंट आपको प्रॉपर हिस्ट्री दे रहा है, हिस्ट्री नहीं दिया तो डिफेंस आ जाता है. कल को मेरे पास ऐसे केसेस है कि पेशेंट ने बोला मेरे को हिस्ट्री डायबिटीज का दिया नहीं और सर्जरी किया है, सादा टूथ एक्सट्रैक्शन किया है, एसएफटीसी में पेशेंट का डेथ हुआ है बिकॉज लेटर टर्न्ड आउट टू बी 450 460 ब्लड शुगर एंड डॉक्टर वाज अरेस्टेड अंडर द नॉलेज कंपोनेंट. तो ड्यू केयर जरूरी है, इसके लिए इट इज एडवाइजेबल. अभी लास्ट मंथ एक केस हुआ है. सोनोग्राफी रिपोर्ट स्टेटेड देयर इज ए इंट्रा-यूट्राइन fetal death. 16 weeks pregnancy. 16. Patient had taken some medicine, and report is like 16 weeks intrauterine fetal demise. But clinically, its patient is in hypotension, so we would have done a laparotomy. It was a rupture uterus, and patient is outside the uterus, but documentation is there intrauterine fetal demise. So in such cases, जहाँ पर documentation आ रहा है कि यूट्रस के अंदर बेबी है, आईयूडी है, लेकिन क्लिनिकल फाइंडिंग्स और लेप्रोटोमी फाइंडिंग्स वो सब रिकॉर्ड कर लिए, वो तो सब अलग है. तो ये केस में अगर कुछ हो जाता है आगे, तो व्हाट इज डॉक्टर का स्टैंड क्या होना चाहिए? देखो, रेडियोलॉजिस्ट के ऊपर सबसे बड़ा रोल आता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस, अब आपके नागपुर बेंच ने 1.25 करोड़ रुपए का सदमा दिया रेडियोलॉजिस्ट को एनोमली स्कैन में, अगर आपने देखा होगा तो. अब गायनेकोलॉजिस्ट इज गोइंग टू बी डूइंग ऑल एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ the report given by the diagnosis. I'll give a very latest example of Washi, Mumbai, where the radiologist has examined the lady and given live fetus in uterus. 12 दिन के बाद पेशेंट एब्डोमिनल पेन लेके प्रेजेंट होती है मिडनाइट में. गायनेकोलॉजिस्ट देखने के बाद उसको याद आता है कि 12 दिन पहले का ही सोनोग्राफी है जिसके अंदर क्लियर है लाइव प्रेगनेंसी है. उसने बोला कि नाइट्री रिपोर्ट सही है, so she has given all the treatment in relation to abdominal pain and thinking that it could be colicky pain or it could be ureteric pain. Sorry, ये stone का पेन होगा, ureteric पेन होगा. दोपहर को 11 बजे जब सर्जन आता है तब तक तो, और उसने वापस सोनोग्राफी, सेम रेडियोलॉजिस्ट जब वापस 11 बजे सोनोग्राफी करता है, टर्न्ड आउट टू बी एक्टोपिक प्रेगनेंसी व्हिच गॉट रप्चर्ड, एंड रप्चर्ड प्रेगनेंसी में पेशेंट रिमेन फॉर 10 आवर्स. लकी एनफ दैट शी सर्वाइव्ड. लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी? ऑफ कोर्स ब्लाइंड प्रोसीजर रेडियोलॉजिस्ट अपना डिमांड करेगा, लेकिन क्लिनिकल फाइंडिंग प्रेगनेंसी की है तो गायनेकोलॉजिस्ट तो एक्टोपिक को पॉजिटिव बोलेगा. तो इन सब केसों में जैसे जो क्रॉस ओवर की बताया, जब आपने जो केस बताया उसके बारे में बात कर रहा हूं, तो रोल ऑफ रेडियोलॉजिस्ट बिकम वेरी हायर इन केस वेयर क्लिनिकली आई कैन हैव अ कंट्रोल ओवर डायग्नोसिस. देन माय रोल विल कम कि भाई उसी केस में लाइव प्रेगनेंसी में मैंने फीटल हार्ट साउंड चेक किया, मैंने बाकी चीज चेक किया जो मेरे को क्लिनिकली मेरे कंट्रोल में है, और उससे मैं कंफर्म कर रहा हूं कि लाइव प्रेगनेंसी है. देन if that is going to be the scenario, then my defense is going to be that, and then my responsibility is going to be that. Otherwise, अगर लॉयर को मिलता है कि भाई ये गायनी का कोई रोल ही नहीं है, रोल इज एब्सोल्युटली ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन, then responsibility goes with radiologist and sonologist. Defense is good, क्योंकि बहुत सारे केसेस के अंदर when I talk about criminal case and civil case, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कोर्ट ऑफ लॉ की बात करता हूँ, तो रोल के ऊपर केस डिसाइड होता है.
अगर किसी डॉक्टर का, अभी मैंने एक आर्ग्यू किया था गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के लिए, गोदरेज हॉस्पिटल का, एंड फिजिशियन वाज इन्वॉल्व वेयर दिस डॉक्टर वाज रिफर्ड, आई गॉट अ फेवरेबल रिजल्ट फॉर गायनेकोलॉजी, सॉरी मेरे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के लिए, एंड दोनों के ऊपर कंपनसेशन आया. तो रोल ऑफ ईच पर्सन इज डिफाइंड व्हेन द मैटर्स गेट डिसाइडेड इन कोर्ट ऑफ लॉ. दैट इज ऑलरेडी स्टैंडर्ड लॉ, द प्रिंसिपल ऑफ लॉ. ये रोल रहेगा तो ही उनको डिफाइन करो, अदरवाइज यू कैन बी सेफगार्डेड इन दैट केस. या चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस है, कुछ लोग Please. पूछ रहे हैं, आप इफ यू आर अ स्पेशलिटी गायनेक डॉक्टर, कैन यू डू अ जनरल प्रैक्टिस और कैन यू डू सुपरफिशियल ऑपरेशंस लाइक सिस्ट, लाइपोमा, Gynae अदर can थिंग्स? do a general practice. MBBS, sorry, BAMS तो बेसिक अंडर ग्रेजुएशन है, तो उनको तो पहले वो राइट है, गायनिक भी हो गए तो दे कैन डू बोथ द प्रैक्टिस. दैट्स हार्म. ओके, नो हार्म. ऐसा नहीं कि गायनिक को जीपी नहीं कर सकते आप. जीपी का बेस तो आपका बेस अंडर ग्रेजुएशन जो ऑलरेडी आपने कंप्लीट किया, तो आप तो बेनिफिट में हो. and what about the fitness in cesarean section? See, as I said, the fitness in cesarean section based on the clinical history given by the patient. If Okay. clinical history कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन सब कुछ सही है, एनेस्थेटिक ने आके देखा, एनेस्थेटिक का खुद का भी ओपिनियन, खुद का भी फिटनेस काफी है. मेरे पास ऐसे भी केसेस हैं जहाँ फिटनेस नहीं लिया गया है, बट केस कैन बी वेल डिफेंडेड इन कोर्ट ऑफ लॉ बाय सेइंग दैट कि इवन द गायनेकोलॉजिस्ट or anesthetic are capable of giving a fitness in such a scenario when there is no history of any disease given by the patient. अब specialized disease का अगर history दे रही है ISD का या diabetes का, तो definitely you need to go with that specialty for more care in that. Okay, right now there is a abortion में 24 weeks तक उन्होंने अभी बताया कि unmarried lady abort कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, पहले अनमैरिड का वर्ड नहीं था, 24 वीक्स तक का अमेंडमेंट आ गया था, लेकिन उन्होंने वुमेन के डेफिनेशन को प्रॉपर्ली डाला नहीं था. और वी आर सो लकी दैट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ मणिपुर के केस में वेयर द गर्ल हैज वेंट फॉर द abortion has not been allowed to do abortion being unmarried, the first time honorable supreme court interpreted the word of woman, कि what the definition of woman, क्योंकि उसके अंदर लॉ के अंदर they have spoken about the lady of divorcee and other living relationship, everything was defined but not about unmarried. तो unmarried को फिर woman का define करके सुप्रीम कोर्ट ने interpret किया लॉ को, and now they say that even unmarried girl come under that position of that particular thing. Okay, in any unmarried girl can go for abortion after the age of 16 years. And after the age of 18 years, even 18. 16 years के अंदर they need a guardian signature because पोसो का जो लॉ है prevention of sexual offense against the child, उसमें एज जो बताया गया है लड़के का या लड़की का 18 years बताया है. तो anything below 18 years, even if at all you come across any conception or suspicion of sexual offense, आपको तो इन्फॉर्म करना ही पुलिस ऑफिसर को, बट इवन इफ एट ऑल यू आर डूइंग एनीथिंग, एमएलसी तो करना ही पड़ेगा आपको. गर्ल के सिग्नेचर की जगह गार्जियन की सिग्नेचर लगेगी आपको. 16 ईयर की गर्ल की जगह एडल्ट की सिग्नेचर लगेगी. 18 years above, yes, girl can sign by her own. Okay, but 17 साल की लड़की रहेगी तो उसका सिग्नेचर गार्डियन दे सकता है, लेकिन वो पोक्सो के अंदर बुक हो सकती है. ऑफ कोर्स आएगी 18 के अंदर. अगर 18 साल की और 6 महीने की डिलीवरी हो रही है तो कंसेप्शन तो 18 महीने के पहले हुआ है. आप समझ रहे हो ना, 18 महीने, 18 साल 8 महीने में डिलीवरी हो रही है तो कंसेप्शन 18 साल के पहले हुआ है, तो सेक्सुअल ऑफेंस में आ गया हो. ओके, ओके. सेक्सुअल ऑफेंस मतलब जिस दिन कांटेक्ट हुआ है उस दिन 18 के नीचे रहेगी तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस देना चाहिए. लड़की 16 साल के बाद सेक्सुअल कंसेंट नहीं दे सकती. वो रेप के अंदर है. नहीं. अगर आपको आईपीसी बताऊं, आईपीसी इंडियन पिनल कोड ने बोला है अंडर 376 कि 16 एंड अबव गर्ल कैन गिव अ कंसेंट फॉर सेक्सुअल इनकाउंटर, लेकिन पोस्को लॉ ने बोला है कि बिलो 18 इयर्स इवन गर्ल कैन नॉट. ओके, सो इट इज ऑलवेज में छूटेगा, इधर नहीं छूटता. तो 18 ईयर इज सेफ फॉर 18 डॉक्टर. years safe. All doctor 18 years safe. उसके नीचे बात ही नहीं करना, बात भी नहीं करनी. और आधार कार्ड ले लेना so that age get confirmed. Some people get duplicate आधार कार्ड सर, राइट? चलेगा ना, at least you are safe ना, at least you are safe. आपको थोड़ी बोला गया कि जाके आगे बताओ. That is at least for your safety you need to have something and self attested. उसकी सिग्नेचर लेना. सर, is there any different law for online consultation? No. देखो, पहले जब आया था कोविड के टाइम पे, आपने देखा था कि कोविड के टाइम पे लॉ जब बना था तो वो टाइम पे सारे 35 के लिए बना था.
ऑनलाइन कंसल्टेशन, आप सबको याद होगा जब एनएमसी का गाइडलाइन आया, अभी ड्राफ्ट गाइडलाइन, वो नोटिफिकेशन आया था, एनएमसी का ड्राफ्ट गाइडलाइन है, उसमें उनको अडॉप्ट किया। वैसे ही कल को सीसीआईएम एनसीआईएम का भी आएगा ही ड्राफ्ट गाइडलाइन, या फिर कोई गाइडलाइन आएगा उसमें एनसीआईएम को पूरा पावर है उसके लिए। तो लॉ मतलब मैं मेरे यूनिट को गवर्न कर रहा हूं। मैं आपको फिर बोला चारों काउंसिल्स इक्विवेलेंट है, कोई सुपीरियर नहीं, कोई इंफीरियर नहीं है। एनएमसी का लॉ मेरे को लागू नहीं होता और उनके लिए ये लॉ लागू नहीं होता, उनके लिए उनकी बॉडी है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड कर देती है, अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओपनली नोटिफाई नहीं किया है, कोविड का ही चल रहा है, डिबार नहीं किया है। कोविड के टाइम पे जिस तरह से बोर्ड ऑफ गवर्नर ने एनएमसी सस्पेंशन ऑफ एमसीआई में जो दिया था, उसी टाइम पे उस टाइम पे सीसीआईएम थी, उन लोगों ने भी दिया था ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। तो वो जो लॉ अभी तक क्लियरली डिफाइंड नहीं है। बस यस, आज की तारीख में नीमा तो डेफिनेटली प्रेजेंट कर ही रही होगी एनसीआईएम को। मेरा भी रिक्वेस्ट है कि उसको, जैसे सर्जरी के लिए नोटिफिकेशन आ गया, वैसे ही आप भी एक नोटिफिकेशन निकाल के ले लो एनसीआईएम से, फिर कौन रोकता है। Okay. Anybody has questions? Can I speak, sir? Yeah, Renu madam, please. From other participants, if anyone want to ask questions, they are. Can अगर I किसी speak, को sir? पूछना है तो रेज हैंड कर दो, मैं अलाउ कर देता हूँ। सुजाता ने हाथ रेस किया है, या किसी को अगर करना है तो बोलो, मैं रेस कर। Yes, sir. I have raised hand. There are some participants from other states. They are asking why they are not allowed. Let them ask whatever question they have got in their mind. Yeah. I'll try my level best to answer them. मैं भी Sir, आपके I am जैसा लर्नर ही हूँ, professor मैं नहीं बोल सकता मैं परफेक्ट हूँ, मैं भी लर्नर हूँ, आपसे कुछ सीखूंगा मैं। Namaskar, sir. I am professor in Dayanand Ayurvedic College, Jalandhar, and teaching the subject Prasuti Tantra, that is gynecology and obstetrics. So many patients come which don't give us the history of taking MTP pills. And when we examine, we see the patient is in shock and bleeding like anything. What should we do? देखो, जब तक आपको ये पता नहीं है कि प्रॉपर हिस्ट्री, द मोमेंट यू कम अक्रॉस दैट शी हैज टेकन एमटीपी पिल, it is my humble request that inform police immediately. That is the MLC what is said, because it is said to be a medical accident, profuse bleeding post MTP tablet, where life risk is very higher. You need to intimate to the authorities. अगर आपको पता है, अगर आपने MLC नहीं किया है, उन्होंने प्रॉपर हिस्ट्री नहीं दी है, कुछ नहीं होता है, तो यू विल बी सेफ गार्डेड। लेकिन कल को उसकी डेथ हो जाती है और बाद में बोले हमको तो अपने डॉक्टर को बताया था, then it will be a problem. So it is better that you इंट्रोगेट दैट पर्टिकुलर पेशेंट। यहाँ वहां से क्वेश्चन पूछ के, सी क्लिनिकली में हम क्या करते हैं, 10 क्वेश्चन पूछते हैं, देन वी गेट आंसर टू अ पर्टिकुलर थिंग वेयर वी नीड टू प्रोविजनल डायग्नोसिस। सो यू कैन आस्क द रिलेटिव, यू कैन आस्क द पीपल एंड ट्राई टू फाइंड आउट इफ एट ऑल दे हैव टेकन एमटीपी, बिकॉज़ योर क्लिनिकल फाइंडिंग्स लाइक दैट, देन यू इंटीमेट। इफ इट इज नॉट गिवन हिस्ट्री, मेंशन ऑन अ पेपर एंड देन लेट गो एंड कंटिन्यू द ट्रीटमेंट, व्हाटएवर हैपेंस इट कैन बी सेफगार्डेड। Okay, thank सेकंड you थिंग, very much, sir. महाराष्ट्र में जिन्होंने पीजी किया है ओबीजीवाई में, अगर वो अदर स्टेट शिफ्ट हो जाती है तो दे कैन प्रैक्टिस देयर। एवरी स्टेट में, फिर से आपको रिपीट कर दूं, कॉन्करेंट लिस्ट हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जहां स्टेट को भी पावर है और सेंट्रल को भी पावर है लॉ बनाने का। हेल्थ सेक्टर जो आता है वो स्टेट के सब्जेक्ट में आता है, एजुकेशन जो आता है वो सेंटर के सब्जेक्ट में आता है। इसीलिए आप देखो इंडिया में सिलेबस एमबीबीएस का, बीएमएस का अक्रॉस द कंट्री सेम मिलेगा, लेकिन जब मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूंगा तो स्टेट को पावर दिया गया है रेगुलेट करने के लिए। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है कि सेंटर लॉ तो बनाएगा, लेकिन वो स्टेट के ऊपर उसको अडॉप्ट करना या नहीं करना। मैं एग्जांपल देता हूं, क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट 2003 में सेंटर ने बनाया, आज तक महाराष्ट्र स्टेट ने अडॉप्ट नहीं किया है। आज 2022 हो गए, तो ये स्टेट का सब्जेक्ट है। तो हेल्थ जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट को रेगुलेट करना है अपने लोगों को। तो हमारे महाराष्ट्र स्टेट ने क्या बोला कि हमको हमारे लोगों को रेगुलेट करना है, माइक्रो इंटीरियर तक डॉक्टर की सर्विस को प्रोवाइड करना है। हमारे पास शॉर्टेज है, इसलिए हम अपना लॉ अमेंड करते हैं। हम आयुर्वेदिक डॉक्टर को, होम्योपैथिक डॉक्टर को मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस अलाउ करने का डिसीजन लेते हैं।
फार्माकोलॉजी कोर्स को उन्होंने डाल के, भले वो चैलेंज किया गया लेकिन स्टेट को पावर था। तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि महाराष्ट्र वाले अगर मान लो साउथ में जाके केरला में प्रैक्टिस करते हैं या कर्नाटका में प्रैक्टिस करते हैं, जहां उसके स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट यू विल बी नॉट बी अलाउड टू प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन इन दैट स्टेट if that state health sector has not allowed it. Even if you are trained under that modern medicine practice, but state regulate the law there, so you will be governed under the law of Karnataka Medical Practitioner Act, not under Maharashtra Medical Practitioner Act. और कर्नाटक में जिसने किया है वो महाराष्ट्र में आता है तो नहीं, वो देखो उसमें क्या हो गया है कि जब 2014 में अमेंडमेंट किया गया था, तब राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के बारे में प्रपोजल दिया गया था गोवा का और कर्नाटका का, जिसको आपके अमेंडमेंट में एक्सेप्ट करके इंट्रोड्यूस किया गया कि पीपल हु हैव डन फ्रॉम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, बिकॉज दे सेड दे हैड डन अ सिलेबस एंड गॉट रजिस्टर्ड अंडर एमसीएन, महाराष्ट्र में आर गोइंग टू बी allowed to do modern medicinal practice because the syllabus of that particular state and that particular industry is already teaching the modern medicine. तो स्टेट का पावर है ना, भले बंगलोर से आया बंदा है या सॉरी उधर का आया बंदा है, लेकिन पावर तो स्टेट के पास वेस्टेड है। तो स्टेट कैन रेगुलेट एज द लॉ द वे दे वांट। स्टेट तो बीईएमएस को भी बोलता है हम अलाउ कर देंगे, स्टेट तो बोलता है हम फार्मेसी वाले को अलाउ कर देंगे, स्टेट के पास एम्पल पावर है। ओके, excuse me sir, I have one question. So it is regarding drugs we use in obstetrics. So regarding pitocin, we are not allowed to keep and prescribe pitocin, misoprostol, even prostadine. I know we are not allowed to do MTP, but sir, these drugs are also used in PPH. We also use in augmentation and induction of labor. So sir, how to manage these medicines, sir, because we are not allowed to keep legally with us. देखो दो चीजें याद रखो बेटा, मैं I'll tell you, I'll give you with the example of various example to you all. Think. If I talk about Drugs and Cosmetic Act 1940, very clearly it defined RMP, it defined a medicine subject, and he also said that doctor is allowed to dispense and store a drug for the use of their patient, but they cannot sell it. Section 80C selling को ब्लॉक करता है, मतलब आप किसी पेशेंट को यूज कर रहे हो, आप भले कंसल्टिंग में उसका चार्ज कर दो, you are allowed, तो आप रख सकते हो। Now coming down to the drug which you spoke about, बहुत सारे ड्रग जो MTP एक्ट में आते हैं या स्पेसिफिकली आपको डिबार्ड किया गया है, कैन बी प्रिस्क्राइब्ड ओनली बाय गायनेकोलॉजिस्ट और कैन बी प्रिस्क्राइब्ड ओनली बाय, जब उस चीजों को डाला गया है तभी आप ब्लॉक होते हैं। मॉडर्न मेडिसिन के बारे में अगर मैं आपको बोलूं तो मॉडर्न मेडिसिन का जब परमिशन आपको मिला गया था, एवरी ड्रग विच हैज बीन ट्रेन्ड टू यू, अगर आपके मेडिकल कॉलेज में ट्रेंड किया गया है टू यूज पर्टिकुलर ड्रग फॉर द पर्टिकुलर पर्पस एंड यू हैव बीन taught that, then no one can challenge you, can be defended well in court. So you need to think about that, what has been trained to me and which I am trained. If at all I am trained in particular drug which are regularly used and that is not specifically barred by FDA saying that it can be prescribed by MTP tablet, बहुत ही clearly लिखा है उन्होंने, can be prescribed only by this. जब या फिर psychiatric drug can only be prescribed by psychiatrist. So unless it is blocked in that particular corner by some act, being a modern medicine practitioner, you are allowed to do that. So regarding TL also same. We study TL in our syllabus, and we are trained in that. But still TL is not allowed, sir. कहाँ लिखा है? Okay, कहाँ लिखा sir? Yeah, it's like tubectomy is not allowed to BMS postgraduates in obstetrics. RTI application file करो. Priyanka ma'am. Yeah. वन मोर थिंग, मेरे को बताओ MTP अलग है, आप समझ रहे हो? थोड़ा सा आपको इंसाइट देता हूँ. Yes, MTP एक्ट, आप समझ रहे हो? MTP एक्ट 1971 ने सेक्शंस के अंदर बार्ड किया, सेक्शन 2 ने डिग्री डिफाइंड किया, क्वालिफिकेशन डिफाइंड किया. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. वो डिफाइन करने की वजह से पीजी आयुर्वेदा स्टूडेंट MTP नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर क्वालिफिकेशन को ऐड नहीं किया. ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 ने होम्योपैथिक को बार्ड किया, एक्ट ने बार्ड किया, इसलिए होम्योपैथिक मॉडर्न मेडिसिन ऑफ प्रैक्टिस नहीं कर सकते. आप समझ रहे हो ना? तो मेरे को बताओ कि अगर मैं आपका एक्ट आपको बोलता लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट एडवांसमेंट, RTI फाइल करो ना गवर्नमेंट को. सर जो पेरिफेरी के हॉस्पिटल्स है वहां पर ट्रेंड स्टाफ नहीं मिलता,
या पूना में भी बहुत जगह ट्रेन स्टाफ नहीं मिलता है, तो उसके लिए लीगल कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं क्या? देखो मैं आपको बताऊं, नर्सिंग होम एक्ट तो फॉलो करना है। अब नर्सिंग होम एक्ट में जब आप रजिस्ट्रेशन देने जाते हो तो क्वालिफाइड नर्सेस का कॉलम आप फिर के देते हो। मैं ये नहीं बोलता है कि आप सबके सब क्वालिफाइड रखो, कोई इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब क्वालिफाइड नहीं मिल पाते, मतलब शॉर्टेज तो है क्योंकि उनकी सैलरी नहीं दे सकते, लेकिन एटलीस्ट 1 या 2 क्वालिफाइड स्टाफ तो आपके पास होना चाहिए, जो जिसको आप बोल सकते हो ऑन रिकॉर्ड कि भाई शी वाज प्रेजेंट देयर एंड शी हैज हैंडल्ड। आपके डिफेंस के लिए बोल रहा हूँ, बाकी इंडिया में तो सब माफ है, चल ही रहा है ना। इंडिया 130-140 करोड़ की पॉपुलेशन है, जब तक कुछ होता नहीं सदमा तब तक सब माफ है। अगर आप लीगली बोलोगे तो प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। लीगली अगर स्ट्रिक्चर पास करने लग जाऊं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। They are demanding JNM sisters. They are demanding JNM sisters. JNM sister मिलते ही नहीं है। तो बता रहा हूँ ना, आप नर्सिंग होम एक्ट में एक आधा तो ANM भी मिलते हैं, बाकी देखो ये आपके हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, एवरी सिंगल हॉस्पिटल इंक्लूडिंग द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आल्सो रनिंग एवरीवेयर इन द कंट्री। मैं तो बहुत सारे कॉर्पोरेट के केसेस हैंडल करता हूँ, डील करता हूँ, वो भले बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की बात करता हूँ, दिस विद एवरीवन, ओपन सीक्रेट है ये, लेकिन चलने दो ना। मेरे इतनी कि whenever some sadma comes ना, we should have on record someone to defend yourself. ये तो आपका डिफेंड बहुत वीक हो जाएगा ना। How you want to defend yourself? Very difficult to defend. शायद बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए और 6 बज गए हैं, मेरे को लग रहा है प्रियंका please mute your device. It is very disturbing to everyone. Please mute your device. कंटिन्यू कर रहा है प्रियंका मैडम। 6 बज गए, लोगों के क्लिनिक का टाइम हो गया होगा शायद। Yes, sir. With a few questions again, Sujit. No, almost we finished all the questions. Okay, okay. Dr. Prem मेरे Raj ख्याल से तो raised his hand. Dr. Prem Raj. Please unmute. प्रेमराज सर आप म्यूट है, अनम्यूट है, अनम्यूट कीजिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ बोलो ना। Actually, regarding the medical negligence part, when it comes to equipments in particular hospital, like there was no ventilator or there was no workstation in that nursing home, and that's why people used to sue the doctor in the court on the basis of medical negligence. Most of the times, Boyle's apparatus is there because most of our doctors, they are having small nursing homes. They cannot afford a good quality, you can say ventilator or workstation, which is very costly. So in such circumstances, what is the boundary that who should keep the higher equipments like ventilator, and where it is scapegoat for these kind of costly instruments? प्रेमराज अगर आपको मैं बताऊं तो लॉ के हिसाब से अगर मैं जाता हूं, if I go very strictly with the law, then if you remember, lots of hue and cry happened when the comment was done by Honorable Supreme Court in respect to the ICU facilities in various nursing homes. Yeah. And that they said that wherever there is a surgery needed to be done, ICU facility must be there. Yes. In generalized law, as a standard practice, it is definitely advisable if you are doing some surgeries, you need to have a complete equipment to safeguard that patient, because that comes under due care. If you are doing surgery and you got a knowledge that patient may go to ventilator, either you need to have that or you need to have a tie-up with a very close hospital where you can provide that facilities to the patient, because law looks to that as a due care. Yes, sir. So these are the things definitely going to be governed. Then every nursing home have to take a call to which instrument and hospital facility they can provide to the patient for the purpose of the same. But if I go with the law, with the micro interior, because lots of my doctors are there for micro interiors and interiors of various state and of the country, beautiful judgment given by Honorable Supreme Court, where they have very categorically say very clearly, which is a great defense to every single doctor, that facility available at particular place at particular time must be considered for deciding the matter. I got a case of MTP which led to a bleeding, profuse bleeding thereafter, and where blood was urgently needed, and blood bank was 45 kilometers apart from that particular nursing home, and for want of a blood, patient died. I argued that matter in Alibag. I still remember that case of a gynecologist,
and I could able to cite this judgment of Honorable Supreme Court, which very categorically said particular. And now in Khopoli, there is not possible to have a blood bank. I'm talking about those days. This matter I argued in 2010-11 seems. So those days in today also in micro-interiors, you will not find a blood bank. Interior, micro-interior. So what law says, the particular facility available at particular time, at particular place must be considered to decide the case. Okay. Second question in series regarding teleconsultation. अभी आपने डिस्कस भी किया डॉक्टर सुजीत के साथ. अगर डॉक्टर इज इन महाराष्ट्र, then it is okay for the modern medicine drugs prescription. But when it comes to teleconsultation, patient is in Kerala or Karnataka and doctor is from Maharashtra. He is teleconsulting the patient, and if the doctor is prescribing some modern medicines in that particular area patient, then it is okay with the law, or is it not? See, cause of action के ऊपर सब कुछ law चलता है कि cause कहाँ हुआ है. जी सर. और cause of action के ऊपर criminal case registered होता है. Jurisdiction किसका है? अब मैंने टेबलेट लिया और मेरे को एलर्जी हुई और मेरा जुरिडिक्शन कर्नाटका है. Yes. तो डेफिनेटली लॉ गवर्न होगा उसके अंडर में. Because criminal law is spoken to be considered as a jurisdiction of the territory. So cause of action plays a vital role, but it is a very overlapping things and thin line difference, which you said. Yes. Because if I talk about my presence of prescribing drug, then law will definitely say that you are very much aware that the patient was in Karnataka and there the pathies are blocked and other things. Then have you taken a wise decision to prescribe? Example I'll give you. Sitting in India, I cannot give a prescription to the foreign patient sitting at Italy. Right. Because I may not be possible that what drug is allowed to be to prescribe under Schedule A, B or D of teleconsultation law may be available there. So synonymous drug, if it is taken, definitely the violation of law. So we need to be very careful where and what practice we do and which angle we do. Okay. Thank you, sir. Thank you, Prabhraj. So, Archana ma'am. All my friend here, yeah, Archana ma'am, please. Some more questions are there. I think Dr. Ashish Zadav sir wanted to ask something. Ashish sir. Dr. Ashish Zadav, please unmute yourself. Dr. Ashish Zadav. ये कौन है? I need to ask a question, लेकिन नाम दिख रहा है अर्चना पांडे, so I don't know. Continuously chat box पे 2-3 बार आ चुका है. Today everyone is Archana Pandey sir. Unmute and ask the question. सर सब अर्चना पांडे हो गए सर आज. हाँ, तो उसपे लिखा है तो unmute करके question पूछ सकते हैं. 2-3 times that chat box has come. Can I unmute? So you can unmute yourself and ask question. Hello. What about the freelancing? If suppose I am operating anywhere. अरे unmute का button है बेटा उधर. You got a left side में unmute का button. Just click that, you will unmute yourself. या क्या बोल रहे थे सुजीत? सुजीत सर आप कुछ बोल रहे थे. जनरल सर्जन फ्रीलांसिंग करते हैं, समझो उन्होंने उधर की सीजर कर लिया, पोस्ट ऑपरेटिव 2 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, व्हिच कैन बी ट्रीटेड इन अ गायनेक सेटअप. ओनर जनरल प्रैक्टिशनर है, बीएमएस है, एमबीबीएस रहेगा, वहां पर जाकर कोई ऑपरेट करता है और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, पीपीएच हो गया, ऑटोनी हो गई, व्हिच गायनेकोलॉजिस्ट कैन मैनेज, but he is not staying there for a long time. So in such cases, who is responsible? Whether the surgeon is responsible? Of course surgeon responsible रहेगा. See, law क्या बोलता है कि when you take a patient, you take a complete care of that patient, and multiple judgment came accordingly. Where when you are qualified in, you are taking a patient, it is your responsibility to continue the treatment and give the best to the patient. So sitting at one place, I cannot take a patient and treat, and you can take a plea that I was not available there. When you feel that there could be a complication and there's a possibility, you need to make available yourself as fast as possible, as early as possible. Yes, if you got a competent doctor, what law further says, if you are not available because of some reason, like ANC का आपने patient लिया है और because of some reason आपको out of station जा रहा है, तो आपको किसी को तो hand over करना है. So when you are not available, you hand over to the qualified people so that can be taken care of. तो आपके पास जो भी RMO होगा, अगर RMO उसका वेल क्वालिफाइड है तो you got a very good defense to that particular corner. And secondly, वो तो आपके साथ टच में है, and then you can rush and immediately go and do the treatment. ना you need to be इतना नहीं कि तुमने ऑपरेट किया है, then you go for leave for 2-3 days and they are not available. So then things will be different altogether. Then you should not have taken a patient when you are going to out of station. So कितना भी फ्रीलांसिंग करोगे तो 20-30 किलोमीटर के अंदर ही करोगे, 40 किलोमीटर के अंदर करोगे, 1 घंटे में पहुंच जाओगे. आप यहाँ ऑपरेट कर रहे हो तो बात की बात है, बट इफ यू आर फ्री
और फिर नहीं जा रहे हो तो मेरे पास ऐसे केसेस आए हुए, गुजरात के केसेस आए हुए, ऐसे 2-3 केसेस गायनिक के आए हुए मेरे पास। लेकिन मैं जानता हूँ कि लायबिलिटी कितनी आ जाएगी। मुझे अगर कोर्ट में डिफेंड करना है तो मुझे तो कहीं ना कहीं पेपर पे चाहिए ना जहां मैं अपने डॉक्टर को डिफेंड कर पाऊँ। तो समवन इज देयर, क्वालिफाइड कोई तो डॉक्टर होना चाहिए वहां पर। हाँ, आप किसको, जब आपको पता है पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन होने वाला है तो यू नीड टू हैव समवन टू टेक केयर ऑफ। होना नहीं, वो तो नॉर्मल केसेस है, नॉर्मल केसेस, नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल ऑपरेट किया। अदरवाइज ऑल्सो अगर नर्सिंग होम है तो यू नीड टू हैव 24 आवर्स डॉक्टर। आरएमओ तो चाहिए। वो तो डॉक्टर है, उनका ही हॉस्पिटल है। तो आरएमओ है ना, आरएमओ कैन टेक केयर ऑफ द पेशेंट, यू कैन बी वेल डिफेंडेड इन दैट केस। क्वालिफाइड आरएमओ है तो यू कैन बी डिफेंडेड इन दैट केस। ओके, देयर इज नो क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी डिफेंडेड। ओके, एनीथिंग एल्स माय फ्रेंड? Even if otherwise any questions are unanswered here, I will request to give me or send me a mail. मेरा नंबर भी मेरे वीडियो पे है 9323446163. You can WhatsApp me. I will definitely answer your question. और मेल है legal@drcom. You can mail me. I will answer that. Otherwise अर्चना मैडम है, प्रियंका मैडम है, सुजीत सर है, और any of the पदाधिकारी, you can take my email ID and number. You can call me. You can send WhatsApp and mail me. I will definitely try to resolve all the answer to of yours. Because of want of some reason, if you're not asking question, not to worry that you will not be answered there. I really thank you all for being here. Priyanka madam, continue करना है और you can conclude. Conclude कर सकता हूँ ना? Yeah, अर्चना मैम conclude करो मैडम कि और भी कुछ है? No, vote of thanks. So you can conclude. So sir. let me conclude, then you can go for vote of thanks. Yeah. To all my colleagues here who has given me a time to listen to me, I will humbly request that I am available for all your people whenever you required, because in Doctors Risk Medico-Legal Services, founded in 2005, in last 17-18 years, I never said no to any single doctor. When call come to me, my first priority is to protect my doctor. I don't take patient's case. I have never taken patient's case in my career. I don't entertain patient to file a case. I always just listen to my doctor with one intention, that if at all my knowledge can help this doctor to come out of the problem at that particular moment, I feel very proud of my knowledge. So whenever you required me, please don't hesitate to call me. I will learn from you something new. If at all in your territory something happen, I will again emphasize to all my doctors sitting here not to worry with any police calls, because you are protected by the law. Don't get terrorized with the police calls. Don't get fall in extortion of antisocial activists who blackmails you, because law is there to protect you. In civil case, my humble request to go to Doctors' website, or you can contact any of the management people, reach to us. We will provide you from New India Insurance Company one of the best indemnity policy ever created for the doctors. It is a professional indemnity policy which can protect you. अगर आपके पास हॉस्पिटल है तो go for error omission policy, because error omission policy के अंदर आपके पैरामेडिकल स्टाफ के मिस्टेक्स, पैरामेडिकल स्टाफ भी कवर्ड है, सारे विजिटिंग कंसल्टेंट आपके हॉस्पिटल के लिए कवर्ड है, किसी भी स्पेशलिटी पैथी के है तो, और आपके डायरेक्टर, कंपनी के ओनर, हॉस्पिटल के नॉन मेडिकोस प्रोप्राइटर सभी कवर्ड है. सो गो फॉर एरर ओमिशन पॉलिसी, बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से लेटेस्ट पास में 90% लायबिलिटी हॉस्पिटल पे आ रही है. अगर कोई भी विजिटिंग कंसल्टेंट का कोई भी केस होता है तो मेजर लायबिलिटी इज गोइंग टू गो टू द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल और एनी हॉस्पिटल. माइनर लायबिलिटी गोज टू द कंसल्टेंट. सो हॉस्पिटल पॉलिसी मैंडेटरी है. दैट इज माय वर्ड, आई यूज मैंडेटरी वर्ड. So I have a professional indemnity policy and error omission policy from doctors.com. You can approach there. Have upgradation of law knowledge periodically. मैं request करूंगा प्रियंका मैडम को, अर्चना, सुजीत और सारे, स्पेशली तंबुरकर सर को और सारे पदाधिकारी को, कि प्लीज रेगुलरली पीरियडिकली अपडेट लेक्चर्स अपने मेंबर्स के लिए करते रहे, बिकॉज दैट इज गोइंग टू रिड्यूस द लिटिगेशन एंड इंक्रीज द रेपुटेशन एंड कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग अ प्रैक्टिस. प्रॉब्ली आज आपने किया, शायद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा. मेरा रिक्वेस्ट है कि पीरियडिकली इसी तरह अलग अलग टॉपिक पे, आज तो वक्त नहीं था, नहीं तो कंसेंट पे मैं 1 घंटे बोलता था, तो अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग सेशंस आप करते रहो, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगी, सो दैट योर नॉलेज कैन हेल्प यू अ लॉट. एंड ऑफ कोर्स गुड कम्युनिकेशन इज द बेस्ट डिफेंस. विद दिस आई रियली थैंक ऑल द पदाधिकारीज ऑफ नीमा, नेशनल के हो, स्टेट को हो, OBGY के हो. मैं अगर आपका नाम नहीं ले रहा हूं तो समझ लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ. सो वेरी वेरी स्पेशल थैंक्स टू ऑल द पीपल हु थॉट and shown a confidence on me to come and speak on medical law topic. Very special thank to my friend Nitin Kotle.
Vishnu sir, and various other important dignitaries. And at last, very, very special thanks to all the delegates who remained here for another 2.5 hours. Still, I can see a huge number of participants listening to us online. में इतनी देर इतने लोगों रहना मेरे लिए amazing है. So thank you all, and thanks to Dr. Priyanka, Dr. Archana and Sujit, जिन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया और क्राउड को अभी तक रुका के रखा. Thank you very much. So it's on you to conclude. That's because of your speech, sir, because we know you are a very dynamic personality in this field. And thank you for giving us a time for this. Thank you, ma'am. Thank you. Dr. Sujit, sir, please present vote of thanks. Kothari sir is not there, na? No, sir. Okay, thank you, sir. Thank you so much for your such a great enthusiasm and talk. On the behalf of NIMA OBGY Society Central, I would like to express my gratitude to the respected Dr. Vinayak Temburnikar sir, Dr. Ashutosh Kulkarni sir, and US Pandey sir for their remarkable support from the NIMA OBGY body. I extend my gratitude to our NIMA OBGY Central President, Dr. Kamini Dhiman, Secretary Dr. Priyanka Nakade Madam, and Treasurer Dr. Vishnu Bhavne sir for supporting and guiding us to conduct the today's session. I would like to thank our respected chairperson, Dr. Nitin Kothari sir, for their chairing both the sessions and giving their input. I would also like to thank and extend my gratitude to our eminent speakers, Advocate Arun Mishra sir. Machwe sir is not there because of some emergencies, but we are very thankful for Machwe sir also. Then I would like to thank Sandhya madam, who provide all the technical support and requirement for the smooth and uninterrupted functioning of this webinar. Last but not least, I would like to thank from my bottom of heart that all the delegates for their participation and presence. Without them, this webinar will not be possible and succeed. Now, with the due permission of all the delegations and chairperson, I would like to conclude the session. Thank you for attending and hope you have earned and gained a great knowledge from the today's webinar. Thank you all. Thank you. I could not able to see Nitin sir. Nitin Kothari sir. Actually, I was Nitin Kothari sir also busy with some. He's joined or not? He joined for some time. Okay. I was waiting for him to meet him. So thank you, Vinayak sir, Pandey sir, Kulkarni sir, and all the dignitaries here, and all eminent personality, Priyanka, Archana, and Sujit, and everyone. Special thanks to Nitin sir, Nitin Kothari, if you are hearing me. Very special. Yeah, Nitin Kothari sir is here right now. He came? Yeah, in the chat box I have seen Dr. Nitin Kothari is here. Oh, Nitin sir, are you there? Can he hear you? Can we hear you? Nitin sir, आप हैं क्या? In chat box, I just received a message. I don't know. I was searching him. So no problem. Let's see. I'll connect to him on the phone. So thank you very much, ma'am. Thank you, Sujit, Archana,